फलंदाज मैदानात दाखल होतोय. पहिला गडी गारद झाल्यानंतर जॉन्सन माघारी 7 या आकड्यावर धावफलक स्थिरावलाय. 22 धावा, 22 लॉस ऑफ 1. नवीन फलंदाज अकबर दाखल झालाय स्ट्राईक एंडवर. अप्रतिम स्विंग अँड मिस. टप्पा पडल्यानंतर थोडस चेंडू बाहेरच्या बाजूला वळला की काय असा भास होतोय. चेंडू बॅटला हवा देत विसावला यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर केली गेली आहे. चांगला चेंडू, चांगलं षटक, चांगला कमबॅक. पहिल्या चेंडूवर षटकार खर्च केला होता. यावेळी फटका फसलाय. मिस टाइम शॉट. बॅटची कड घेतली चेंडूने, कारंजा उडाला. यष्टीरक्षकानं बाकीचे सोपास्कार पूर्ण केले. आणखी एक हादरा. अकबर 0 या धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन निघालाय बॅक टू दी पॅव्हिलियन. अंदाज आलाय. क्षेत्ररक्षणावर नजर टाकतोय युवराज नावाचा. ओंकारसाठी बाकोल पद्धतीचा चेंडू होता. थोडासा आउट ऑफ द स्टंप आणि त्यावर फटका खेळलाय कव्हरच्या दिशेनं. एक धाव मिळाली. एका धावेच्या मदतीने स्ट्राईक रोटेट झालाय. जो नॉन स्ट्राईक एंडवर बराच वेळ तमाशा बघतोय तो सचिन आता मात्र स्ट्राईक एंडवर सज्ज झालाय. तर सचिनच्या बॅटमधून 2 षटकार निघाले पहिल्या षटकामध्ये आणि त्याची पुनरावृत्ती. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता हेच बचावाचं साधन. आणि सचिन आल्या आल्या गोलंदाज युवराजवर धमाका हल्ला बोल केलाय. षटकाराच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलाय. यावेळी फटका फसलाय परंतु क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवर आहे. एका टप्प्यावर चेंडू अडवला जाईल. परतीची फेक येईल तोपर्यंत गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान 2 धावांसाठी
परतलेली पावलं आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय 32 धावा धावफलकावर. 32 लॉस ऑफ 3. अल्टीपल्टी यावेळी कनेक्शन टायमिंग ताकद सगळ्याचा मिलाप अगदी अचूक झालाय. चेंडू घरंगळत जमिनीला चाटत पुसत स्विचिटच्या फटक्यावर चाललाय. सीमा रेखा पार. 4-4-4 चौकार. धावफलक पोहोचले तब्बल 35 धावा. 36 धावा माफ करा. 36 लॉस ऑफ 3. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅटचा फटका खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. बऱ्याच वेळानंतर निर्धाव चेंडू गणला गेला सचिन या फलंदाजासाठी. ओहो हो यावेळी चुकीचा फटका. प्री माइंडेड शॉट होता की काय. लेग साईडला खेळायचं होतं. मिड विकेटच्या डोक्यावर मिळवायचा होता आणि हेच कदाचित हरलं युवराजनं. थोडासा टप्पा पुढे ठेवला आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त केला. यष्टा उद्ध्वस्त केलाय. केल्लिया बेकरदी चलता किया पाठवलाय माघारी. बॅक टू दी पॅव्हलियन. चौथी विकेट तिसऱ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर. फलंदाज मैदानात दाखल होतो तो गौतम. थोडासा प्रेम करण्याचा प्रयत्न. धावा मिळतील या चेंडूवर. तिसरी धाव अगदी चपळाईनं पूर्ण केली आहे. बॉलर नेम प्लीज. बॉलर नेम जेरी. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. वाईड+3. ओहो हो फुल टॉस चेंडू. बॅटची कट देखील घेतली होती. यष्टिरक्षक फंबल झालाय आणि पंचांचा इशारा आलाय. नो बॉल साठी चेक केलं जाईल तिसऱ्या पंचांकडून आणि तदनंतर डिसिजन दिला जाईल.
नो बॉल. बॅट्समॅन फ्री हिट. संधी असेल हात पिठवण्याची, मोमेंटम शिफ्ट करण्याची. जो स्टार्ट दिलाय सचिननं त्याला पुढे नेण्याची. 42. उघडा डोळे पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. पुन्हा एकदा लोचा पिसाळा आलाय. चेंडू विकेटच्या दिशेनं अडवला गेलाय, परंतु पंचांनी लोचा डिसिजन दिलाय. अर्थात नो +1 आणि फ्री हिट देखील चालू असेल. सलगचा दुसरा बूमर आलाय. कदाचित पंचांनी तो निर्णय देखील लागू केलाय, तो नियम लागू केलाय. दुसरा बूमर अर्थात गोलंदाज मला चेंज करावा लागेल, बदलावा लागेल. नवीन गोलंदाज आणावा लागेल आणि तो नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. जुनेद फ्रेडची संधी होती. यावेळी लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू. पंचांचे दोन याद झाले. समांतर धाव मिळेल, अवांतर अतिरिक्त 1 धाव खात्यावर जोडली जाईल. फ्री हिटचा चेंडू, फ्री हिटची संधी कायम असेल. दबाव. यावेळी चांगला फटका. कनेक्शन थोडस मिस झालं जोडून, परंतु मिस फील्ड आणि चेंडू चाललाय वन डाऊन. सीमारेखा पार. चौकार. चेंडूवर मोठा फटका घेणं जोखमीचं असेल आणि तेवढं शक्य देखील नाहीये. त्यामुळे एकेरी दुहेरी धावा याच बचावाच्या. एवढ्या प्रतिम चेंडू, ब्लॉक खोल पद्धतीचा चेंडू. कदाचित घाई केली गौतमनं आणि त्याचा परिणाम भोगावा लागतो. नॉन स्ट्राईक एंडला रनआउट केलाय. फॉलो थ्रू मध्ये जुनेतनं आणखी एक विकेट. अर्धा संघ तंबूत परतलाय. 5 विकेट, 52 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 52 लॉस ऑफ 5 विकेट. यावेळी वेगावर स्वार होऊन टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु डोक्याचा वेध घेतलाय चेंडूनं. चांगला चेंडू होता, परंतु यावेळी थोडासा बॅकफूटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑफसाईडला कट करायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडू. धावफलक स्थिरवले. 53 आकड्यावर 53. लॉस ऑफ 5 विकेट.
after completion of fourth over. हाणामारीचं षटक, शेवटचं षटक, पाचवं षटक, डेथ ओव्हर. जबाबदारी दिली कमलाकर या गोलंदाजाच्या खांद्यावर. पहिला महिला चेंडू घेऊन सज्ज झालाय. फुल टॉस, बीमर, नो. चेंडूची दूरी बघावी लागेल. चेंडू अडवलाय, परंतु 2 धावा निश्चितच मिळतील. नोची 1 धाव. सोने पेसवागा. चुकीला माफी नाही. पंचांनी इशारा कळवलाय फ्री हिटचा. यावेळी ऑफसाईडच्या दिशेने कट करायचा होता चेंडू. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची झाली आहे गणना. फ्री हिटची संधी हुकली आहे. आतापर्यंत या इनिंग मध्ये 3 बीमर टाकले गेलेत. चांगला चेंडू होता, परंतु बीट झालाय. यष्टीरक्षक देखील बाईकच्या स्वरूपाची 1 धाव पंचांनी कळवली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक हे पुढे सरसवले गेले. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 57 धावा. 57 लॉस ऑफ 5. यावेळी चांगला कनेक्ट झाला नाहीये, परंतु 1 धाव नक्की मिळेल. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावले. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 58 धावा. 58. यानंतरचा सामना असेल तो म्हणजे टायगर ब्रिगेड केपीएम वर विपक्ष अंश 11 पेरनेम. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण प्लेइंग 11 घेऊन नाणेफेकीसाठी या. अप्रतिम मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. ब्लॅक होल क्षेपणास्त्र वापरलंय आणि डेथ ओव्हर मध्ये हा चेंडू बऱ्याच वेळा बघायला मिळतो आपल्याला. वाईड यॉर्करचा वारंवार प्रयत्न केला जातो आणि यावेळी एक चांगला यॉर्कर. सरळ दिशेनं खेळलेला फटका. 2 क्षेत्ररक्षक चांगल्या पद्धतीने अडवलाय चेंडू. 1च धाव दिली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावले गेले. धावसंख्या पोहोचली आहे 5 गड्यांची मोबदल्यात 59 धावा. चांगली टोटल आहे, कारण शुभमने ज्या पद्धतीने 3 विकेट्स घेतल्या त्याचा विचार जर केला तर या धावा खूप आहेत. बॅटची कड घेतली चेंडूनं. मागच्या बाजूला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 1 धाव नक्कीच पूर्ण केली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे 60 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी आवश्यकता असेल 61 धावांची. 30 चेंडूंचा खेळ, 61 धावांची आवश्यकता. काय होईल या सामन्यामध्ये? कुर्तोरी वॉरियर संघ नाणेफेक जिंकला. सुरुवातीच्या षटकात जवळजवळ 15 धावा खर्च केल्या, तरी देखील कमबॅक केला होता शुभमनं. परंतु स्पार्टन्स वेलिम संघाच्या खेळाडूंनी तरी देखील धावा जमवल्या. 60 पर्यंत मजल मारली आहे. 61 धावांचं आव्हान ठेवलंय. काय होईल परिस्थिती? 61 धावांचा रतीब हा पूर्ण केला जाईल का? या धावा पूर्ण केल्या जातील का? कॉल पुन्हा एकदा दिला जातोय. अंश 11 पेरनेम विपक्ष टायगर ब्रिगेड केपीएम या दोन्ही संघांना प्लीज बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर टॉस. यानंतर ऐकूया आवाज सर हरीश काकोडकर. धन्यवाद.
म्हजो इश्ट आनी सगळ्यांचो एक बरो वांगडी आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई म्हणपाक जाता, पण सगळ्यात व्हडली वळख म्हणटा तो क्रिकेटीचो अंपायर बाब असलम शेख हाजो आज वाडदीस आसा आनी त्या खातीर फोर्स नॉट 7 आनी मॉडेल मारगांव हांच्या संयुक्त विद्यमानान हो आयोजीत केल्ल्या सगळ्या वांगड्यांनी ठरयलां की हो वाडदीस असलम बाबालो आज आमी केक कट करून हांगा साजरो करतलो. बाकीचे जाचे वांगडी असलमाचे दोगांक विनंती करता ताणें बी माचयेर येवचें. सदगिरी नायक, पुण्य पालकर, येस डीजे बजाव. देव तुका बरी भलायकी दिवं आनी बरें आयुश्य आरोग्य दिवं आनी असोच क्रिकेटीच्या थराचेर बरी अंपायरींग कर आनी मोठे मोठे टुर्नामेंट तुका हाजे फुडें तुज्या लायफान जिवितान मेळूं आनी बरे डिसिजनां तुजे कडल्यान घडूं अशें हांव देवाक मागणी करतां. आनी आमी आतां सेकंड इनिंग्सा कडेन मुखार वळया. कितें जाल्यार कोता येता केक सिस्टमॅटीक कट करून कॉमेंट्री बॉक्सां पावपा जाय. Nicely put away, very nicely, and he gets away with the boundary. Just bending down and knew exactly where the placement was, and he did it a good job. Gets the boundary, gets off the mark. That should be the start. Because power play overs are very important. Once power play over is done, the field restrictions just goes a bit. Requesting
Ansh Padne to kindly report immediately. Ansh Padne. So Vaibhav, professionally he is a police inspector in the police department, but passionately a cricketer. And not only here, but he also plays in leather ball cricket. He's a very compactly, technically very sound, very tall, very strong. So gets off nicely with his beginning. Rajaram will be on strike. Oh, he gets him shuffled across too much. He exposed his leg stump and hits the bullseye. The bowler. 5 for the loss of 1. Sixty runs in 5 overs. A slightly curtailed game because of the late reporting of the teams. And we are very strict as far as rules and regulations are concerned. 4s, not 7. Nicely put away. There's a man in the deep. And oh, that has been not the best efforts here. There should have been much better effort. That's why you can see the pain on the face of the bowler. But nevertheless, a 6 to begin the proceedings for Amol. Has been, I've seen him many a times in the past during his prime time. He used to just blaze away and torment the opponent bowling attack. To be a very, very strong player. And he was a regular goer as far as open tournaments are concerned. Part of many of the big teams, Amol. And now still looking good. These are some veteran players, legends who are playing here on this ground because that passion drives them. Appeal, there's so much of noise here. He was desperate to get the wicket of the police inspector and celebrate, but that was not the case. Just a dot ball here. The ball going back to the keeper and finishing off this over. End of over number 1 is 12 for the loss of 1. No balls. The bowler was taken out of the attack. He was bowling beamers. And I think that total, which we could have been 50, went towards 60. Nicely driven, very strongly driven here by Vaibhav.
And we'll be looking to pick a couple of runs. They have turned around sharply and completed that quite easily in the end. Amol is not the quickest around nowadays, but he understands the need of every possible extra single. And that's why turning around and watching the partner was key instead of watching the ball. That's where the trust comes on your partner, whether it's already gauged nicely or not. So again, another strong drive. Very good bowling, I must say. Just keeping in mind, he's not going for the wickets, but he's trying to bowl a fuller length and asking the batter a hit in the V area, which is the longer part of the boundary. Next match is going to be Ansh 11 Pandm and Tiger Brigade Capem. In the air, not timing. Absolute miscue here, and the fielder has taken the catch. Wanted to go over the mid wicket, got almost the leading edge and straight into the hands. No error from the fielder. Amol walks back, and a very good wicket here for the team of Spartan Wedding. It's 16 for 2. Junaid comes in, clips away on the leg side. Another strong player who plays for Margao municipality, but since this is constituency, he falls in the Kurtorim constituency. So that's a good value addition for the Kurtorim constituency side, Kurtorim Warriors. Good aggressive shot, but the ball is not getting lifted over the top. I think there is a little bit of low bounce as the bowler is trying to bowl a fuller length. Pretty good over. He's picked up the wicket and kept the things in check in over number 2. Just the 6 runs considered by Sachin. It's 18 for 2 after 2. So in comes Afzal, a crucial over, because now they had got 12 runs in the first, just 6 runs in the second, so they need to catch up now. They need to catch up with that previous over which went in favor of the bowling side. So who is going to do the catch-up job? Another whack there, still not getting the right meat of the bat. Is getting the singles over in the backward square leg region. The idea is right. Idea is trying to pepper that and use that short square leg boundaries and get as much as possible in that area. Most of the maximums, most of the big shots have been played in that square leg and a backward square leg as well as that cow corner region. Junaid on strike after the single. Another play and a miss. They are trying to play across, but the bowlers are bowling a full length. Afzal understands, and I think they must have definitely had a chat. Also, they must have seen the highlights of the previous day, how the bowlers, successful bowlers, have bowled on this wicket. Not a right ball, not a right ball. That's been clobbered over the top, and that goes all the way for 6 runs. And it's referred to the third umpire for above the waist height. Meanwhile, Aslam has come out as a third umpire just to gauge whether it's a no ball or not. Doing his job. Fair delivery, says the third umpire, well below
the waist side, as the batter had bent down while playing the shot. So sometimes it might look as if the ball was a little high, but you got to take it in the standing position when umpire makes the decision. So it's going to be 6 runs. So that's good 6 here. 7 so far taken off this over. Another one tried, just a wide-ish line. Well bowled here. Good comeback by Afzal. Once again, that same area. So the issue is you are trying to play across, but you got to have the right connect. And for right connect, you should be in the right position. नाइसली प्लेड. तशेंच गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि केपेचे 4 फावटचे धडाडीचे आमदार, आदले आमदार भौमानेस्त श्री बाबू कवळेकर हांगा पाविल्ले आसा. तशेंच आता सध्या कला अकादमी आसा ताचे अध्यक्षपद तांकां मेळिल्लें आसा. तर तांकां आमी ह्या वेळार फोर्स नॉट 7 परबी भेटयतात. तशेंच तांकां येवकार करता मोठ्या दबाज्यान ह्या फोर्स नॉट 7च्या टुर्नामेंटात आमदार चषक मॉडेल मार्गांव आणि फोर्स नॉट 7 हांच्या संयुक्त आयोजनान हे केल्ल्या टुर्नामेंटाक आमी श्री बाबू कवळेकर हांकां सन्मानान वेदिकेचेर बसका दितात. So let's get back to the match. At the end of 3 overs, the score is 26 for the loss of 2. So pretty good over here from Afzal, just conceding 8 runs. 26 after 3. So 35 runs needed in the next 12 balls. So this over has to go for at least 18 to 20 runs for the last over to be going in favor of Kurtarim Warriors batters. Yeah, that's the one. That's the start that they needed. Right in the slot, clobbered away, over the top. And that's the maximum. Good welcome here to the bowler from Junaid. They needed it badly. Junaid is a big hope because he can lift the ball in a big way. Another one, but this was a slightly dragged in short, slightly shorter length, and was kept slightly outside the line of off-stump. You got to be very smart and very agile when you're thinking what line and what length to be bowling, especially to different batters on different wickets. Vishal. Another one tried, could not lift that. Just was almost into the same length, same area. Just missed the timing. They are desperate here to pound on anything. Police inspector by profession, but he's just so much of love for the game. Vaibhav is on strike, but he's looking for a big strike now. And also another fabulous cricketer, PI Rahul Damshekar, had batted, had played with him for so long, many a times. I'm not seeing him nowadays. Maybe he is busy with his profession. But I think he should come on the field to get his old touch. There's so many fans of PI Rahul Damshekar that are waiting for him for those reverse shots. In the air, opportunity. And it's been dropped. And it's been dropped. Can you believe P.I. Vaibhav Naik has been dropped here? He was going on top. I think that should have been taken.
I'm certainly sure, looking at the way Pierre Webb Naik is batting, Rahul Damshekar will definitely would like a bat in his hands and try to go straight away right now. But he's not in the team. He might get an opportunity in KPM team. Nicely driven. The singles definitely won't work the cause here for them. A good over in the end, considering a 6 of the very first ball, then gives away just 3 runs in the entire over. Marks the end of over number 4 is 35 on the board and 26 runs needed in the last over. So in comes the left-hander, Salamat. Nicely clipped away. Is he looking to get a boundary? But single it is going to be. So they did a good job here, Spartan Velim. And I think looking back at this game, I think those no balls, those full toss balls, those extras, what was gifted by Kurtarim Warriors, I think definitely has hurt their spirits. If a score was 50, it was definitely worth chasing. But sometimes when the bowlers are so tedious and doing a good job, not giving anything easy, it's going to be difficult to chase. Clipped away, nicely bowled right on the toe line of the batter, just getting the bat on time. Another single taken. So looks at this moment they are comfortably placed. They already almost won it if they go by the legal terms of bowling the next 3 balls without much fuss. Well, nicely put away. Very, very strongly put away. That goes for 6 runs. Shuffled across and just flicks it away with tremendous power of the wrist. Too late. It's all coming too late when it's already done and dusted about the result of this game. They just moved on to 43 when the target is 61 and a couple of balls left in this game to finish. Another one swatted away. Man in the deep, straight to him. And no runs taken. So the formality of bowling the last ball will be done here. Meanwhile, we'll request both the teams, Ansh Pandm and Tiger Brigade KPM, come for the toss. Please report here for the toss. Ansh Pandm is requested to report here. Tiger Brigade KPM are going to play next. And up against Ansh Pandm. Both are very strong outfit in tennis ball cricket tournament. So they will be upbeat against the team. तशेंच प्लेयर ऑफ द मॅच आमी अनाउन्स करता. प्लेयर ऑफ द मॅच एक जबरदस्त बॅटिंग परफॉर्मन्सा खातीर स्टार्टिंगेक येवन बरे 3 दमदार सके आनी एक चौको अशें मारून 26 रनाची जी इनिंग्स केली ताचे खातीर सचिन ऑफ स्पार्टन वेळीची कॉन्स्टिट्युएन्सी. तर त्या खातीर हांव श्रीयुत बाबू कवळेकर सर हांकां हांच्या लागीं विनंती करता तांणी मातशे वयल्यान देंवचें आनी थेट प्रेझेंटेशन एरिनात येवन हो प्लेयर ऑफ द मॅच सचिनाक सुपूर्द करचो एक बऱ्या परफॉर्मन्सा खातीर.
Next match between Ansh 11th Pandm versus Tiger Brigade KPM. KPM won the toss, elected to bowl first. चला KPM प्लीज. और दोनों टीम से रिक्वेस्ट रहेगी 12th मैन कंपल्सरी इन कमेंट्री बॉक्स. 12th मैन कंपल्सरी इन कमेंट्री बॉक्स. बोथ टीम प्लीज नोट. और दोनों सिम से रिक्वेस्ट रहेगी डगआउट कंपलसरी. डगआउट कंपलसरी है दोनों टीम. बोथ टीम प्लीज नोट. चला दोन्ही संघांना विनंती आहे आपला 12वा खेळाडू पाठवा. 12th मॅन प्लीज. And also dugout compulsory. Both team please note. नमस्कार फिर एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत. एक बड़ी प्रतियोगिता आमदार चषक 2025. पहला मुकाबला आज का स्पार्टन्स वेलिम और कुर्तोरी वॉरियर्स के बीच में खेला गया. चल बैट्समैन प्लीज कम. अंश 11 पेरनेम बैट्समैन प्लीज. बोथ टीम 12th man compulsory in commentary box. Please note. पहला मुकाबला जो कि स्पार्टन वेलिप ने जीता है और अब बिल्कुल मुकाबला केपेम और पेरनेम के बीच में होगा. और सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर दाखिल होती हुई जो कि गवरेज सावल देसाई और लक्ष्मण सावल देसाई, देसाई ब्रदर्स. टॉस जीता केपीएम ने और फील्डिंग का फैसला जो कि स्वाभाविक रूप में लिया जाता है वही फैसला लिया. और अब अंश पेरनेम के सामने वो बल्लेबाजी का न्योता. पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी पेरनेम टीम. अंश 11 पेरनेम और सामने होगी एक बड़ी टीम टाइगर ब्रिगेड केपीएम. अच्छा माहौल
और इस मुकाबले में मजा आएगा जरूर। दोनों तगड़ी टीम है, दोनों टीमों में तगड़े खिलाड़ी है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कभी एक दूसरे के खिलाफ भी खेल चुके हैं, तो बिल्कुल मजा आने वाला है ये मुकाबले में। गेंदबाजी के मोर्चे पर किस गेंदबाज को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? विजय वेलिप वार्म अप कर रहे, शायद उन्हीं के कंधों पर वो जिम्मेदारी दी जाएगी। अंपायर का इशारा बन चुका है। क्योंकि केपीएम द्वारा विजय ऑन स्ट्राइक, बाबू गौरी सावदेसाई पहली गेंद अपने अनोखे अंदाज में गैप में खेला गेंद को और आखिरी पल में रोका गेंद को। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट्स। जब तक गेंद को वापस किया जाता तब तक 2 रन बने। 6 ओवर का मुकाबला, 6 ओवर मैच। शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद 2 रन, खाता खोला और अगली गेंद का रहेगा इंतजार। हो उड़ाना चाहते थे दूसरी गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। रफ्तार के ऊपर सवार वहां पे विजय वेलिप, एक बढ़िया गेंदबाज, एक बढ़िया खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी के कंधों पर वह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओ अल्टी पल्टी करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, शायद तो भाप लिया था पहले विजय ने। अल्टी पल्टी की कोशिश होगी तो ऑब्स्टिक के काफी बाहर डालने की वो कोशिश, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, डॉट गेंद। ओहो बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पैरों के ऊपर ब्लॉक होल में बार बार वो परेशान कर रहे बल्लेबाज को। तारीफ करनी पड़ेगी विजय की। हालांकि ये पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, और इस ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है। लक्ष्मण ऑन स्ट्राइक, लक्ष्मण और फायर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पे लपका है कैच, स्वप्नेश वेलिप के सेफ हैंड। जरूर मौका बना था और वो प्रयास भी हुआ था लक्ष्मण द्वारा, लेकिन थोड़ी सी ताकत कम। अच्छा कैच स्वप्नेश द्वारा। विजय वेलिप, मैन फ्रॉम कानकोन, परम के और एक होनहार खिलाड़ी स्वप्निल मलिक बाबा, उनको वो बाबा वाली जिम्मेदारी निभानी है। अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मैदान के ऊपर। ओ ये अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, तारीफ बार बार हो रही है और क्यों ना होगी। विजय वेलिप, मात्र 3 रन खर्च हुए इस ओवर में, उसमें भी एक लेग बाइज का, तो मात्र 2 रन खर्च किए विजय वेलिप ने पहले ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी, काबिल तारीफ। और अब वो जिम्मेदारी होगी आपको गौरेश देसाई को हल्के में ना लेना है, क्योंकि अगर इनका बल्ला चला तो जानता है पूरा गोवा क्या हो सकता है। वो धमाका करने वाला खिलाड़ी है और गौरेश को वो काम करके दिखाना पड़ेगा। इतने दूर से आए हैं तो आपको काम करके ही जाना पड़ेगा। पहले ओवर में जरूर वो नाकामयाब रहे और अब उनके सामने सत्यवान का वो चैलेंज रहेगा। सत्यवान वेलिप,
और एक बढ़िया खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर 17 नंबर जर्सी। ये 17 किसके लिए बनेगा खतरा। शुरुआत अच्छी हो चुकी है केपीएम के लिए। क्या ये मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है आने वाले ओवर में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया लाइव प्रक्षेपण लाइव एज के माध्यम से। ओ फिर एक बार सफल हुए थे, बाहर निकले थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। पहली गेंद लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा। और बार बार वो बीट हो रहे हैं, बार बार बीट किया जा रहा है। अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी सत्यवान द्वारा। ये बढ़िया शॉट, ये लेदर बॉल की याद दिलाता है भाई बार बार। बाबा की वो बाबा वाली बल्लेबाजी। अच्छी शुरुआत। लेकिन सत्यवान क्या कमबैक कर पाएंगे। पहले गेंद के ऊपर वो काबिलियत दिखाई है सत्यवान ने, लेकिन अगले गेंद के ऊपर अटैक किया स्वप्निल मणिक ने। अगले गेंद का रहेगा इंतजार, थोड़े से फील्ड में बदलाव। शॉर्ट कवर को डीप में लेके गए हैं। ओ अल्टी पल्टी गेंद ने मारी है कल्टी, सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में। ना कोई रन की गुंजाइश है, ना कोई बल्ले का संपर्क है। ढूंढो ढूंढो रस्सा जना, बिंदी गेंद, डॉट गेंद। वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही है। ओ कुछ अलग करने की कोशिश, बल्लेबाज गेंदबाज को थोड़ा सा वे फिकर करने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद निकली। जब तक गेंद को उठाया जाता तब तक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, रन संख्या मात्र 9 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर। एक विकेट के नुकसान पर 9 रन, 9 लॉस ऑफ 1। ओ बार बार वही कोशिश, वही नाकाम कोशिश हो रही है बार बार। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ये अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। लेग बाइज का इशारा। सत्यवान वेरी अच्छी गेंदबाजी। ये खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद के नीचे फील्डर, इसका मतलब विकेट का पतन। खुद कप्तान विश्वजीत देसाई गेंद के नीचे पाए गए और कोई गलती नहीं। स्वप्निल मणिक बिल्कुल ताकत कम। और क्या ये शॉट सिलेक्शन सही था, ये भी सवाल रहेगा। अपने अंदाज में खेलने की कोशिश जरूर की उसने। इस बार और एक मिस टाइम शॉट है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। आखिरी पल तक नजरें बनाए रखी और रोका गेंद को अंदर। मात्र 2 रन।
अभी तक करेक्ट अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा है, बाबू को कोशिश करनी पड़ेगी और वो जरूर कर रहे हैं अभी। घबराई साबर देसाई, इस बार कनेक्शन और नतीजा परिणाम भी रन भी मिलेंगे। जिसकी कोशिश हो रही थी बार बार अल्टी पल्टी, वो रन नहीं बन रहे थे, इस बार कनेक्शन हो चुका है और रन भी बन चुके हैं। 94 के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ रन संख्या पहुंची 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विजय वेरिप पहले ओवर में सस्ती गेंदबाजी की थी, लेकिन अब पहले गेंद के ऊपर 2 रन, उसके बाद 4 रन, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बन चुके हैं अब तक। लेकिन विजय वेरिप जानते हैं कमबैक करना और ये कर सकते हैं, लेकिन क्या कवरेज को रोक पाएंगे? बढ़िया गेंद यॉर्कर, ये जवाब था विजय का। इस बार मिस टाइम शॉट, ताकत कम और विकेट का पतन। जाना पड़ेगा वापस कवरेज साबर देसाई को, बार बार कोशिश कर रहे थे जरूर, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे इस बार, और जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पेविलियन। खेल होते हुए मनोज तांडेल, आड़े बल्ले के साथ इस बार गेंद को घुमाया है और विकेट का पतन। क्या बढ़िया फील्डिंग हो रही है, क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। बैक टू बैक दूसरा विकेट। विजय वेलिप इज ऑन पॉसिबल हैट्रिक। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर रामा सारगावकर। विजय वेलिप इज ऑन पॉसिबल हैट्रिक। पिछले मुकाबले में भी वो हैट्रिक गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन हैट्रिक नहीं कर पाए गेंदबाज। क्या विजय कर पाएंगे? फर्स्ट हैट्रिक ऑफ द डे, बिखर दिया विकेटों को, चलता किया रामा सारगावकर को। हैट्रिक बॉल के ऊपर काफी साधारण प्रदर्शन, बहुत ही साधारण प्रदर्शन। और शायद क्या रामा को इस गेंद के ऊपर बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए था, यह बड़ा सवाल रहेगा। थोड़ा सा रुकने की जरूरत थी, अब तक 4 विकेटें गिर चुकी थी, आपको रुकना था मैदान के ऊपर, और वो गलती खामियाजा भुगतना पड़ा। और मैदान के भीतर साहिल दाखिल होते हुए, भाई भाई के ऊपर अब वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर स्वप्नील
स्वप्नेश दिखाई देते हुए। स्ट्राइक रेट के ऊपर स्नेहल। ये फुल टॉस गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई बल्ले को चूमती हुई निकली, सीमा रेखा पार। 4 4 4 4। चौवा निकलता हुआ छोटू के बल्ले से गोवा पुलिस के और एक जाबाज सिपाही, लगभग आधे से ज्यादा टीम गोवा पुलिस के सदस्य ही दिखाई दे रहे पेरनेम की टीम में। मनोज तांडेलो, स्वप्नील मणिक हो, अब स्नेहल ऑन स्ट्राइक। यह बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन क्या दूरी, जी नहीं, ये शायद पहले से ही फील्डर रखा गया था। इसका मतलब यह है कि ये प्री माइंडेड गेंद है, पहले सोच समझ के डाली हुई वो गेंद, और स्नेहल का और एक साधारण शॉट, जाना पड़ेगा वापस पेविलियन की ओर। किसी एक को रुकना है भाई, मैदान के ऊपर किसी एक को रुकना है, वो प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा मैदान के ऊपर, वो जरूरत है टीम की। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए सुशांत। न्यू मैन इन। शुभम मैदान के भीतर। आते आते अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बार बार वो हाराकारी हो रही है। हर एक बल्लेबाज द्वारा बड़े शॉट का प्रयास हो रहा है। रन संख्या मात्र 20 के ऊपर अटकी हुई है। अभी भी 2 ओवर है, इस ओवर के बाद तो मौका है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, सिंगल बना, दूसरे के लिए लौटने का वो कोई इरादा नहीं। सिंगल के साथ 21 रन, 21, लॉस ऑफ 6 विकेट। अब तक 6 विकेटें गिर चुकी है। और साहिल ऑन स्ट्राइक। इस बार क्या कनेक्शन हो चुका है, शायद रन बनेंगे और बन चुके हैं। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4। चौवा निकलता हुआ। 3 बल्लेबाजों ने अब तक कोशिश की है चौवे की, लेकिन उस पारी को आगे लेके नहीं गए। ये चौथे गेंदबाज है साहिल, इनको रुकना है मैदान के भीतर। लगभग इसके बाद 13 गेंदें शेष है अब तक। फुल टॉस, क्या ऊंचाई ज्यादा है इस गेंद की। जी हां, चली गई गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। लोअर फुल टॉस थी, फायदा उठाया और आड़े बल्ले के साथ भेज दिया गेंद को। इस इनिंग की पहले 6, पहला छक्का, 31 रन बने, 31, लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेटें, 31 बने हैं। क्या और रन बनेंगे, बन सकते हैं। सिद्धेश केलुस्कर गेंदबाजी के मोर्चे पर, और ये 2 ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों टीमों के लिए। अब मुकाबला बराबरी का होगा, क्योंकि अब तक रन जो कि 4 ओवर में 31 बने, यहां से जो रन बनेंगे वो तय करेंगे किसका पकड़ा होगा बारी। ओ
ये शायद ऑब्स्टेक के बाहर वाली गेंद कट करने का प्रयास था। संपर्क नहीं कर पाए। ये वाइड गेंद, ये ऑब्स्टिक के काफी बाहर वाली गेंद, शाहरुख खान की स्टाइल में टाइटैनिक की याद दिलाते हुए अंपायर सदगिरी नाइक सर, एक अंपायर की भूमिका में असलम शेख सर और तीसरे अंपायर के जिम्मेदारी में पुण्य पालकर सर। गेंदबाजी के मोर्चे पर सिद्धेश खेड़ुस्कर, स्ट्राइक एंड के ऊपर शुभम, शायद वही बार बार गलती, अंपायर का इशारा फिर एक बार बना वाइड गेंद का। पेरनेम टू मडगांव निकली ये गेंद, जरूर ये मडगांव टू पेरनेम निकली गेंद। फुल टॉस गेंद, इस बार सिंगल बना है और शायद वो बढ़िया फील्डिंग का, और केपीएम टीम ने बहुत बार दिखाई ऐसे फील्डिंग। सिंगल के साथ 34 रन, 34 ऑन द बोर्ड। ओ ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए ठीक तरह से और सिंगल बना। इस बार क्या कनेक्शन हो चुका है जी, नहीं ठीक तरह से नहीं कर पाए, सिंगल बनेगा। अच्छी गेंदबाजी सिद्धेश खेलुस्कर, पहले कुछ गेंदों में लाइन से भटके जरूर, लेकिन अब ऑन द ट्रैक गेंदबाजी। लेकिन बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को अब चार्ज लेना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा। अगर अच्छी गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजों के लिए अगर मौका देना है तो बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा। ओहो, सफल हो चुके थे, रिवर्स स्वीप के लिए गए, क्या करना चाहते थे वो, डबल माइंडेड शायद। स्कोर कार्ड पहुंचा है 37 रनों के ऊपर, 37 नॉन स्ट्राइक एंड। साहिल मलिक स्ट्राइक एंड के ऊपर शुभम, हर एक बल्लेबाज रिवर्स स्वीप की शायद प्रैक्टिस करके आया है, लेकिन वो बार बार कोशिश हो रही है, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, रन बने 37। पांच ओवर की समाप्ति। After completion of fifth over, score moves on 37, loss of 6 wicket. थोड़ी देर रुकने की कोशिश की है इन दोनों बल्लेबाजों ने, जो कि शुभम और उनके साथ साहिल हस्सी। गेंदबाजी के मोर्चे पर राहुल, केएमपीएल प्रतियोगिता में पहले गेंद के ऊपर गुरु आरुष्कर को चलता करने वाली ये खिलाड़ी है, ये गेंदबाज है राहुल, राहुल देसाई। ओ हो, ये
साधारण गेंद अंपायर द्वारा वाइड गेंद, अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। तो बीमर नापा जाएगा, भापा जाएगा और उसके बाद इशारा आएगा। थर्ड अंपायर की भूमिका में सरपुण्य पालकर। It's a no ball. That's when next ball is free hit. अगला इंतजार रहेगा फ्री हिट गेंद का। वो कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से, सिंगल जरूर बनेगा। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? वो मौका ही नहीं दिया फील्डर ने। अच्छी फील्डिंग, कम बैक करते हुए वहां पे राहुल देसाई। राहुल की तारीफ हुई थी और उसके बाद उनके द्वारा वो बीमर। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 39, 39 रन। और फुल टॉस गेंद इस बार सीधी तरफ खेला, गेंद को सिंगल ही बनेगा। क्या बढ़िया फील्डिंग का नजारा है। ऐसी फील्डिंग हर बार गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस दिलाती है, मदद करती है। गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है तो उनको मौके पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साइल्स ऑन स्ट्राइक। ओहो हो, ये बार बार फुल टॉस गेंदे हो रही है लेकिन फायदा नहीं उठा पा रहे, फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन वो फुल टॉस गेंदे भी रफ्तार से आ रही है, उसको कनेक्ट करना उतना आसान है नहीं। आपको उस गेंद के ऊपर टाइम करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड 41 के ऊपर रुका हुआ, 41। मात्र 3 गेंदों का खेल शेष है। अच्छी गेंद ब्लॉक करने की कोशिश, सिंगल जरूर बनेगा। तो 42 रन, 42। लास्ट 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। कितने रन बनेंगे? 42 बन चुके हैं। क्या लड़ने लायक स्कोर खड़ा करेंगे 2 गेंदों के ऊपर? ये फुल टॉस, ये ताकतवर शॉट है। मिड विकेट के ऊपर से घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बूम।
But good bowling performance, and now they have to do the job, a clinical job of chasing these 49 runs. Starts off with the wide. Rajdeep will be on strike. And Swapneshwar, the man in form, will be at the non-striker sense and up the order for his KPM constituency team. Tiger Brigade KPM. Going for the switch hit, but I just slipped over there. Lost a balance and fell on the ground. So that's why the single run was not possible. It's a good batter, Rajdeep, and gets the switch hits right. But sometimes it's a temptation for many of the batters to go for the switch hits right from the word go. You have not seen what the bowler is doing, what the pace is, what the wicket is doing. Temptation of having all the fielders on the offside inside that 20-30 yard circle. Full toss ball, loose delivery, put away easily. Boundary to begin here for Rajdeep and the team. Tiger Brigade KPM. Well, they should definitely take some leaf out of the books of the bowling of Tiger Brigade KPM. The bowlers of Ansh 11 Pandm, they stuck to their task, bowled discipline, line and length. They could have bowled one or two wide balls at the beginning, but then they recovered very well. They could not concede. They did not concede much in the entire innings apart from those 2 sixes and 4 boundaries that we see. And that's why the score is just 48. Very strong bowling performance. Sahil was the lead scorer for Ansh. Swapnesh is very quick. He's also working in the Goa police. There are so many of players in both the teams that are working in the police department, and they have to keep themselves fit, and that fitness certainly showing on the field. Very much match fit, most of the players. Looking to pick, and that is a good catch. That is a fabulous catch. He wanted to play it over the long leg, but at that time the ball got an inside edge, hitting his legs there, and just was ballooning and almost going down. Swapnil Marik was alert. He kept his eyes on the ball and kept it at the last moment and diving forward and taking that catch. A really good reflexive and keeping his eye focused on the ball. That was important over there. Getting rid of important batter Swapnesh, who goes back. It's 5 for 1. In fact, 6 for 1. Play down the ground, chance of taking a catch. Oh, that could have been spectacular. Brilliant effort in the field, charging towards the ball, not waiting for the layback, not going for the defensive, going for the aggressive. He must have hurt him himself. Snehal Malik over there, almost like a tiger trying to catch his prey, coming down, just maybe popping out at the last moment, but a brilliant effort nevertheless. Nothing short of spectacular. Just that the ball could not stay in the hands. 8 on the board. Picked away nicely, picked the spot, and there goes the ball. We have to wait for the umpire's decision. It's 6 runs, a wonderful shot here. He picked the spot. That was a shorter side of the area on the square leg, and he found important at the crucial 6. Marks the end of over number 1. Is 14 for the loss of 1.
So in comes Kunal to bowl over number 2. Pretty good runs, 14 runs, courtesy of one boundary from Rajdeep and a big 6 from Ganesh Keruskar. Picks away, there's a man down in the deep and it's been taken. Well, he tried to play it off the back foot but just could not get the power behind and maybe not short enough. But Rajdeep hits back. Another wicket has been taken by the bowlers of Ansh 11. It's 14 for 2. Good beginning here for Kunal, who picks up the wicket, and that is what is required for the team of Ansh 11. They need to keep on taking wickets and pile the pressure on the new batters. Well, clipped away nicely. Although it was a full toss ball, he could have swept it over the backward square leg region, but I think it was a premeditated shot. It was a presumption that he's going to bowl a yorker. I'm going to tap for a single and give strike to Ganesh Keruskar. That might be the plan. More strike to this big man who can strike big wonders. Got tremendous power. I've seen him many a times. That is another one. I told you, this is the police power. This is police force for you. Got it right of the screws and goes long. Clobbered it for 6 runs. Can hit a long 6 is Ganesh, and that is an indication back-to-back 6s here and consecutive deliveries for him. He goes another one. This might be a chance, a difficult one. But taken well just here. Trying to go inside out over covers. Could not get to the pitch of the ball. And there goes another wicket. They are getting the runs, but they are also losing the wickets in ploy of getting those quick runs. It's 21 for 3. Ganesh Keruskar hits back. Wicket and crucial wicket was striking well. 14 scored by Ganesh. Nicely played. Well played to get a single. That should be it. The asking run rate is not much. They should be just sensible enough. Just one good hit. The asking run rate will come down below 6 runs per over. So they have to wait for the right opportunities. The loose balls. Loose balls will come on offer. Will come on the way. Switch it, but man placed there. Just going to be a single. They know very well what are the strengths of the players. Nowadays, YouTube is good enough to get you all the replays and the assessment of different players. And that is the end of over number 2, a single to finish it. 23 for the loss of 3 at the end of 2 overs, chasing a total of 49 in 6.
Looking for a single run out opportunity. Sent back by Vikram. I think it was the right call to send him back. He never saw where the ball was, and keeper was well aware. Crucial over here. Satyavan going for his favorite shot. The switch hit. They have already protected there. This is the second time he successfully played the switch hit, but the man has been placed in the right position, that deep backward point. And that is what is stopping that boundary. Good with the fielding set, I must say. Swept. Intended to get a single. Two-man converging on the ball. So Vikram is not going for the big shots at the moment. He knows there is ample time left in the game. So let's not hurry up and concede another wicket here. Important is rotating the strike. There are 26 runs required of 24 balls. So it's just a matter of one good over and they'll be through. Tiger Brigade kept him. Oh, that was almost hitting the target. Once again shuffling across on the offside, exposing his stumps. What they have done is his favorite shot, his high scoring efficiency shot has been blocked by the bowlers, and that is what making him slightly discomfort in the middle. Well driven, firm cover drive. Oh, you can see the ball ricocheting. The ball might hit for the boundary. Well stopped inside. He might be looking for a third run there. The batter turning around and sharply running, completing the third one. Wonderful running between the wickets. So maybe we want to see the exact decision here, whether the ball has been stopped inside or the ball has touched the rope. The third umpire will storm into action. Four runs. So it's a boundary declared here. Ball ricocheting off the fielder, and then it was difficult for the fielder at long off Snell Malik. He tried hard, but the ball has touched the rope. This is in the air, once again going for the switch hit. This time it's not Satyavan, it's Vikram going for the switch hit. They have placed a man over there. They got their required runs in the over. They'll be happy with that boundary that has been considered by the blip in the field. Marks the end of over number 3 and is 31 for the loss of 3. 18 required of 18 balls is the equation. Run a ball. As simple as that, but it can be as difficult as you can get as well if you don't play it properly, using your mindset, using your cricketing knowledge. And if you lose the composure out in the middle, anything can happen in the game of uncertainties. Sometimes when you see a target of 30 runs, 35 runs in 2 or 3 overs, you know that I have to hit hard. And that only way is the aggression. But when you come close to the target, that is where most of the batters lose that composure and try to do something different. Well bowled here, very well bowled. So almost bowling on the lines of Sunil Narayan, bowling those quick cutters, hiding the ball back behind and not giving an indication whether he's bowling the off cutter or the leg ones. But he's sharp as well. He's quick. He's not too slow. And that's why the batters have to be very careful with respect to that last delivery stride. When his arm is up, you got to see whether he's bowling those off ones or the leg ones. Single taken of the second ball from Snell. Straight down the ground. Good timing, but the fielder is placed another single.
Good thing that they are not allowing the dot balls to pile up. Single from both the batters in this over. A dot ball definitely was given of the first ball. Left it all alone, not trying to fiddle with that. Is going to get an extra run. There are two fielders in that deep short covers in short extra cover region. One placed in the deep backward point, one in the short fine. And he's trying to bowl an off stump line. That is what the plan is. Well driven is the strong driver. Once again, gets another single. He knows the equation is run a ball. He has already covered that dot ball with a wide, that extra that was given by Snehal. 35. 14 needed of 14. Just that one good shot, and the morale of the Pandm team camp is going to drastically go down. Still they are fighting. And that's a dot ball. Very well bowled here. Trying to go for the square cut. Ball keeping slightly low. They bowled good length. In fact, both the teams have bowled very well. If you bowl with the right length and the right areas, it's not going to be easy to get runs on this wicket for any of the batters. It's just that loose balls, full toss, short balls, or close to the body line, who have strong power. Another one, switch it right, straight to the man, no chance of a run there. Back-to-back dot balls, and Snehal just gives little smiles. And it's getting a little tricky out here. End of over number 4, just the 4 runs considered in over number 4. And the score is 35 for the loss of 3, 14 needed of the last 12. $14 needed of 12. The difference is one shot, but that is a big difference in the game of cricket. Who is going to hit it? Who is going to bell the cat? And that's going to be another single. The focus is going for the switch hit. That temptation, although being tried, but it's not being served by the bowlers. So they got to be careful with that. If they consider another 2 dot balls, then there will be definitely it's going to be a shivering here. Oh, that could have been a dot ball that ricochets off the leg of keeper. Another single. They're trying very hard to get a bye signal here by the main umpire. So it's 12 of 10. Pandm versus KPM, North versus South battle. Coming all the way from Pandm here to play at the Konkan Railway ground in Margao. They are fighting it out. Once again, nicely bowled. They're getting the singles, not convincing singles, I'm telling you. Vikram got those singles quite early, was driving the ball well, tapping the ball well, but this time they are bowling quick. They are bowling quick there, and they are bowling right in the block hole. They got 3 singles, somehow sneaking in. Straight down the ground, this might be a chance. Snail Malik doesn't commit a mistake, and given straight into the throat. And that's another wicket gone down. Important is a dot ball as well. This is exactly what I was mentioning. It was climbing on the batters to go for the big one. Lakshman has bowled exceptionally good over. All the 3 singles that have been taken are all byes or leg byes. Not a single run considered of the bat, and he gets the wicket of the 4th ball. So it's 38 for the loss of 4 wickets with 11 needed of 8 deliveries.
send him at number 6. A drive strongly, should have been stopped there in the short covers. Gets a single, moves the score to 39. Another 10 needed of 7. They have to dive themselves. They have to concentrate, focus hard, stop everything that is coming on the way. But if you talk about the betting side, they are just a boundary or a 6 away. What a good fighting and resilient performance here from Ansh 11 Pandm. That's a wide. That's a definite wide. Just once again trying to focus outside the line of off stump. Ends the over on a high note. 5 overs gone. 46 for the loss of 4. Just 3 needed in the last 6 balls. Once they break free with that 6, they were more comfortable. So Vikram's experience and Vikram's time on the wicket that was spent was turned out to be important in the end. That was given the victory here with 3 balls left. So we will now announce the player of the match, Ansh 11 Pandm. Hard luck and better luck next time in the next tournament. But you have shown some resilience and fighting spirit in spite of posting an average total here. So player of the match undoubtedly to the man who has picked up the hat trick is Vijay with a wonderful bowling spell of 2 overs, 8 runs and 4 important wickets. Those 4 wickets has broken the backbone of the entire batting order, and that's the reason why you see a total of just 48 runs on the board. And the bowler is definitely getting the credit for his hearty performance with the ball. So player of the match is going to be Vijay. रिक्वेस्ट करता स्पार्टन वेळीम आणि टायगर ब्रिगेड कॅप्टन टॉसाक घेवचो.
स्पार्टन वेलिंग टायगर ब्रिगेड केपें टॉसा घेवचो बेगीन. प्लेयर ऑफ द मॅच विजय कोण दितलो? सार्थक सातर्डेकर हांगा आमच्या मदीं आसा. सार्थक सातर्डेकराक विनंती करता ताणें माचे वयल्यान देंवचें आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जो प्रेजेंटेशन जी माची आसा थंय वचून विजयाक प्लेयर ऑफ द मॅच हो अवॉर्ड जी ट्रॉफी आसा ती दिवची. परबी विजयाक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मन्सा खातीर ताका हें प्रायज फावो जाता. सो ओवर टू द नेक्स्ट गेम दॅट इज द प्री क्वार्टर फायनल्स. टॉसा घेवचो बेगीन दोगांय. टायगर ब्रिगेड केपें आमकां मागीर टायम जाता 6 ओव्हरीची मॅच आनी स्पार्टन वेळीम बेगीन येयात.
फुल टॉस गेंद शुरुआत की है, मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई निकली है सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत होती हुई टाइगर ब्रिगेड केपीएम के लिए। अच्छी शुरुआत, पिछला मुकाबला पेरनेम के सामने और वो जीता है। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा बिल्कुल लेग बाइज का, तो अतिरिक्त 1 रन के साथ खाते में बदलाव, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देते हुए बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। ये फुल टॉस गेंद, बैठक शॉट, निकली है गेंद फ्लाइटेड, 6 रनों के लिए, छक्का निकलता हुआ, क्रैकिंग शॉट। रेखा पार, 6 रनों के लिए, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। नई गेंदबाज सचिन और एक फुल टॉस गेंद, ये फुल टॉस गेंदे बार बार दिक्कत पैदा करेगी। स्पार्टन वेलिप टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला, लेकिन पहले ओवर में 24 रन खर्च किए राजा ने। इस बार खड़ी हो गई गेंद, घेर के नीचे फील्डर, लेकिन दूर से लपकने की कोशिश। और बात की जाए तो राजा ने राजा की तरह खर्च किए रन, बहाल किए हैं, दान किए रन। और अब सचिन थोड़ी सी कंजूसी गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है। एक शायद वो विकेट कीपर को प्रयास करना चाहिए था उस कैच के लिए।
और एक फुल टॉस गेंद, बार बार वही कोशिश, वही साधारण प्रदर्शन। अगर ये ठीक तरह से कनेक्ट हो जाए ना तो बिल्कुल ये सीमा रेखा पार होके ही रुकेगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद का रहेगा इंतजार सचिन। और एक फुल टॉस गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन। इस बार खराब कनेक्शन, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधी निकली है विकेट कीपर की दस्तानों में। विकेट कीपर की कोई गलती नहीं, काम पूरा करते हुए विकेट कीपर, और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। राजदीप लौट रहे बैक टू द पेविलियन। थोड़ा सा लंबा रनअप सचिन ने नए गेंद बल्लेबाज के लिए लिया। गणेश, बेहतरीन गेंद, तेज तरार निकली है, बल्ले का हवा नहीं देती हुई निकली विकेट कीपर की दस्तानों में। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या रुकी हुई 28 रन, 28, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर। थर्टी, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी गेंद, इस बार कारपेट के सारे गेंद को मोड़ा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 2 फील्डर दौड़ रहे, गौतम की मिस फील्ड और लगभग गेंद निकली है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। ये गौतम की गेंद थी ही नहीं, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पे थे तो उनको प्रयास पहले करना चाहिए था, और लुढ़कती हुई गेंद निकली है, नाक के नीचे से वो रन मिले। वो चौका लगाया नहीं, फील्डर ने दे दिया है। यह अच्छी गेंद इनसाइड एज, जब तक गेंद को गैदर किया जाता तब तक सिंगल बना, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, 35 रन, 35 ऑन द बोर्ड।
अफजल का अच्छा प्रयास, अब तक अच्छी गेंदबाजी। रनअप बड़ा है लेकिन धीमा रनअप, लेकिन आखिरी पल में वो एकदम जैसे चार्ज हो जाता है। यह अच्छी गेंद, शायद मौका बनेगा। जी नहीं, मिड विकेट के ऊपर से हवाई फायर, फिर एक बार गेंद निकली है सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। बड़ा शॉट निकलता हुआ। फील्डिंग बहुत कुछ मायने रखती है। हर एक रन, हर एक मिसफील्ड, हर एक विकेट, हर एक जीवन दान, हर कुछ बदल सकता है मुकाबले में। ओ बल्ले का किनारा, कमबैक है अफजल का और जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पेविलियन। मिस्टर गणेश, गणेश क्या यूज करने के लिए है पेविलियन की ओर। बचाओ। भीतर दाखिल होते हुए सत्यवान और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार सचिन। चौथा ओवर 3 ओवर में बने हैं 41 रन 41। ये अच्छी गेंद, पहली गेंद सम्मान के तौर पर खेला, गेंद को कारपेट के सारे मोड़ा। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक आते झपटते वापस करते, सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, फिर एक बार दिखाई देता हुआ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 42 रन 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार थोड़ी सी चहलकदमी करने की कोशिश और निकली है गेंद चौवे के लिए, 4 रनों के लिए। आपको फील्डिंग तगड़ी करनी पड़ेगी, आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, आपको उस तरह की फील्ड सेट करनी पड़ेगी। और पिछला मुकाबला अगर देखा होगा स्पार्टन ने, तो वो केपीएम की फील्डिंग काबिल तारीफ थी। इस बार अच्छी गेंद, टिप्पा करने के बाद तो बल्ले को हवा देती हुई निकली विकेट कीपर की दस्तानों में। कमबैक करने वाली वो गेंद, सचिन द्वारा प्रयास जारी है, लेकिन फील्डरों का साथ मिलना जरूरी है। ये फुल टॉस गेंद, ये कमाल भी है और धमाल भी है। फिर एक बार घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से, निकली गोली की रफ्तार, आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बूम। कमाल है और धमाल भी है, सीमा रेखा पार, फिर एक बार डायरेक्ट चंद्रार, 6 रन। के ऊपर 58 रन, 58 रनों की मानो बरसात हो रही है धूप में। ये चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन,
उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर और वो बचे उस गेंद के ऊपर शायद, क्योंकि एक चौका 2 छक्के खर्च किए इस ओवर में सचिन ने। 16 रन खर्च किए और 17 रन, एक विकेट के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 58 रन, 58, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर। तो देखना पड़ेगा अब कौन सा गेंदबाज आने वाला है, गेंदबाजी के मोर्चे पर किस तरह की गेंदबाजी करता है, क्या इस जोड़ी को रोक पाएंगे, क्या खास करके क्या सत्यवान को रोक पाएंगे, क्योंकि स्वप्नेश ने 2 छक्के 1 चौका 2 चौके लगाए हैं और बहुत देर तक नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थे। ये अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश थी, थोड़ी सी टिप पर थोड़ा सा पीछे जरूर रहा, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए। बल्ले को हवा देती हुई गेंद निकली, बल्ले के कान में गुनगुनाती हुई गेंद निकली। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और फिर एक बार हल्के हल्के गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटते हुए। ये थोड़ी सी साधारण गेंद थी, इस गेंद को आड़े बल्ले के साथ घुमाया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है तो सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ 59 रन, 59 ऑन द बोर्ड। अंपायर का भूमिका में पुण्य पालकर सर, सदगिरी नाइक सर और थर्ड अंपायर की भूमिका में असलम शेख सर। ओ ये कुछ अलग करने की कोशिश थी, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, अल्टी पल्टी की कोशिश थी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बिंदी गेंद, डॉट डिलीवरी, लेकिन सीधे बल्ले से रन बन रहे हैं। आड़े बल्ले के साथ अल्टी पल्टी के साथ आपको स्विच हिट के साथ रन बनाने की कोशिश तो साधारण प्रदर्शन रहेगा। और इस बार मिस टाइम शॉट, फॉलो थ्रू में रोका गेंद को, तब तक सिंगल बना तो सिंगल के साथ 60 रन पूरे होते हुए 60 ऑन द बोर्ड। कड़क शॉट, कवर के ऊपर से गोली की रफ्तार से निकली है गेंद, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए मैक्सिमम सिक्सर। खूबसूरत टाइमिंग, बेमिसाल कनेक्शन, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए मैक्सिमम। बूम। ओ हो, और एक कड़क शॉट और एक बेहतरीन शॉट, लॉन्ग लेग रीजन में निकली है गेंद, 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए सिक्सर मैक्सिमम। सत्यवान आज स्वप्नेश, आज स्वप्नेश ने
तहलका मचाया है, एक ही नाम गूंज रहा है। ओहो हो ये, और अगर ये शॉट निकल जाता ना तो 50 पूरे हो जाते, लेकिन अगर मगर के लिए स्थान है नहीं। 45 रनों के ऊपर आउट होके वापिस लौटना पड़ेगा स्वप्नेश को। और एक विकेट इस 3 गेंदों में। ओ ये शायद पहले ही बल्ला घुमा चुके थे। विकेट, बहुत देर के बाद ऐसी गेंद होगी जो बल्ले से ना टकराई। इसके बाद होगा मुकाबला आरुष 11 पेरनेम वर्सेस पर्रा क्रिकेटर्स कलंगुट के बीच में। तो आइए भाई, बोथ कैप्टन प्लीज कंफर्टर्स। फुल टॉस, फुल्ली लॉस, लॉन्ग लेग रीजन में निकली है गेंद, फिर एक बार डायरेक्ट चंद्रार बजाओ। छक्के, 6 रन और एक फुल टॉस गेंद, फिर एक बार उसी दिशा में खेला है गेंद को, फील्डर दूर रहेंगे और गेंद निकलेगी रोलिंग 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 रोलिंग, बाउंड्री। 4 रन, चौवा निकलता हुआ और 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 90 रन, 89 ऑन दी बोर्ड, 90 रन टू विन, जस्ट 36 डिलीवरीज। 90 रनों की जरूरत, 90 रनों की जरूरत। 6 ओवर का खेल है, दूसरी इनिंग की शुरुआत हो जाएगी। स्पार्टन वेली क्या बदला लेगी, बल्लेबाजों द्वारा वो क्या बदला देखने को मिलेगा, वो पलटवार देखने को मिलेगा। किस तरह से होगी शुरुआत, किस तरह से होगा अंत, आइए सुनते आवाज फिर एक बार हरीश काकोडकर सर। अच्छा, वेलकम सर।
So Vijay, yes, we are all set for the run chase. A big total of 90 runs to be chased for the Spartans of Wim, and the man who has picked up the hat-trick in the previous game begins the proceedings high on confidence and high on morale. Once you pick away a hat-trick and also adjust the player of the match, there is a string in the stride of every bowler. That is what he does, and he gets another one. I told you, there is a string in the side. He believes that he can pick few more, and he starts off with the wicket of the very second ball. First one departs. Sachin, without opening the account, is none for one. So Akbar at number 3. Straight back past the bowler, and another opportunity throw should have been much more quicker. There were enough men at the back backing off, so throw should have been much quicker. Don't understand the reason why the fielder was not throwing quickly. I can understand when there is no backing there by the fielders, where are 3 to 4 fielders behind. This was nicely bowled, very nicely bowled, and he has understand what length to be bowled on this surface. He's trying to bowl just outside and trying to make the batsman drive on the front foot. Top class bowling from Vijay. Another one. There's a chance of picking a second wicket of this over, easily taken in the mid-off region. He is hitting the bat harder, and he's got one more batter going back, packing the bags, heading back to the dugout. Is none for 2. What a start, what a bowler. Vijay on a roll. That's a good shot. That's a good shot. And another one. There is a man out there. Maiden triple wicket over here from Vijay. Can you believe? Well, he is right now the highest wicket taker in this entire competition. 4 in the first game and 3 in this first over itself of the second game. Not a single run conceded by this young fast bowler from Pandm. And he is always into the wickets column, exactly bowling where the fielders are. Swapnesh is one of the safest around. 3 men have been sent back without even opening the account, not for themselves and not also for the team. None for 3 after the end of 1. Satyavan comes in. So now the field is a spread of 90 now. Looks very big total with 3 already sent back packing. They are bowling very, very diligently. And they understand that now we are not facing, our backs are not facing the wall. It's the job of chasing by the side chasing. Spartan waiting. There's another one. This is coming straight to the throat and is taken very nicely by the captain Vishwajit. Nicely judges it very close to the rope. They are yet to open their account. They have lost the 4 wickets. All 4 gone on duck.
Sachin, the first one, then it was Akbar, then it was Kabir, and now it is Johnson. Omkar is trending at the non-striker's end. It's none for 4, Spartan very. So Gautam coming in to give company to Omkar. Both have not faced a single ball so far. And no run has been posted on the board. There's another one. This might be the half the side. Half the side has been sent back. Captain versus captain, and it is Vishwajit. He is not leaving anything. They are just pouching it easily. And safe hands here. All the fielders taking good catches. Is 0 for 5. Not the figure that you want to see in any cricket field. What a sorry scorecard when we are looking at a total of 90 runs. We expected a good fight from the Spartans. Well, now the bowler will be on a hat-trick. Back-to-back wickets. Vijay already will be on a hat-trick of the next over. He picked up the wicket of the 5th ball and the 6th ball in the first over. And now in the 2nd and 3rd ball, Satyavan picks up 2 wickets and will be on a hat-trick. These Kapekars are enjoying themselves. The bowlers, the batters. Raja comes in. Lovely ball. Good delivery. But finally they get off the mark. Finally they get off the mark. And they get off the mark with a couple run-out opportunity. And that will be, we have to wait for the umpire's call. Umpire saying he has made it in. He grounded the bat. So 2 runs to begin the proceedings here. 2 for 5. Well, they will not have hoped for such a drastic start. This half the side means top order batters have gone. So owners becomes even difficult here, and the bowlers are bowling really well. When it is started by Vijay, always starts in a good note. You should always support your main bowler. Just like whenever Bumrah bowls well, it is been backed by a wonderful bowling performance from Siraj. And many other bowlers. This should be 6 down. This should be 6 down. It's catching practice coming at the long off region. They are not dropping. 3 wickets for Vijay and now 3 wickets for Satyavan. Although both have not got a hat trick, but can you believe that? It's already 6 down. The match is over before it is started. 2 for 6. Now Omkar will be facing his first ball. Oh, what a shot. What a shot from Omkar. He tried to bowl a short ball and it's been whacked away for 6 runs over square leg region. That is some answer to the bowling class of Vijay. He knows that he has made a mistake by bowling a short ball there. Ball on a hat trick. He missed out. Driven nicely. Man in the deep. Driven for a single. So they move on to 9. 9 for the loss of 6. That targets Vishal on strike. Once again, not trying to go for the hard shots. We are into almost the lower middle order, or you can call the tail end or batters of Spartan. Karim and Omkar is showing his quick bat speed and ability to clear this outfield with that one flowing 6 runs over the square leg.
looking to go for one more. This was not dead too short. Seven wickets so far in the second match itself for Vijay of Tiger Brigade Karim. Another one, another one. There is this might be the 8th wicket for him. No, it has been dropped. Oh gosh, this could have been 8 wicket. All run out opportunity on the cards. It's been missed by Vijay. He never saw it. There was loud call from the wicket keeper, but he never heard it. This could have been 8 wicket. It was straight in, straight out. This was once again well beaten. The bat and another single taken. So that is going to end over number 3. I think it's going to be 3 wicket haul for him in this. It could have been 4, but missed by the fielder at the long off region. 3 overs have been bowled. It's 12 for the loss of 6. Chandresh comes, play and a miss. Big wild swing here from the batter. So opportunity for the bowlers of Tiger Brigade Karim to oh, this is good shot. This is some shot. This might go long. And yes, it has gone. It's just powered it away for 6 runs. Showing some glimpses that this team definitely some possess a talent down the order. They can't be complacent, understanding that they need to finish this game. The bowling side as well. If you be complacent, you might win, but you might lose some confidence. Keep on the high momentum that you have. Keep pushing them hard. Keep taking wickets. And not try to give away loose ones, wide ones, extras like this one. So they are trying. Chandresh is 19 on the board. Another one tried. Vishwajit will be getting another chance of taking the catch, and he takes it. He takes another one at the long on region, patrolling that important position and not dropped a single one. 7 wickets down, 19 for 7. Vishal departs. Glimpses of some ability with the bat, but he also departs, and wicket here for Chandresh. 2 wickets for Chandresh. So it's 19-20 for the loss of 8. Pritesh, मातसो हांगा कॉमेंट्री बॉक्साकडे यो. Pritesh.
That's another dot ball here. So bowler's doing a good job. It's end of 4 overs, 20 for the loss of 8 wickets. So 8 wickets have been taken. Great performance here. 3 wickets for Vijay, 3 wickets for Satyavan, and 2 wickets now for Chandresh. He also joins into the wickets list. So another 2 overs, another, I think it's just a formality left here of this game to be over. So going through the motions, nothing else. Number 9, number 10 batting, Suraj and Afzal on the crease. It will be a great victory here for the team of Tiger Brigade Capem. Straight down, so hard work here for the captain once again, but he does a good job. So Gitesh comes in, young 17-year-old prospect here for the Capem. Future has been given a chance, and that's been bludgeoned over the top. There's a good pickup shot on the leg side. Good to see that young boy has been given a go. Because they know that they are well in control of this thing. Opportunity here to give the 17-year-old boy a go at these batters. Just to give him the confidence of playing in a big tournament. The feeling of playing and bowling in situations like this one. Much better situation to be bowling. No pressure whatsoever. You just have to bowl good line and length. Asking run rate is juice. The result is loud and clear. Lovely bowling. Nice line and length. Batters still trying hard for the 6. Sliced away, and was a chance. I think it just went in front. Just dropped in front over the fielder there. Gets another single. 28. Just 7 deliveries left in this match to get over. Wide down the leg side. Sometimes when you are young, you are trying to hurry into the things of bowling into the overs quickly. Young boy definitely playing more matches will learn as he plays more games. Off the back foot, single down the leg side it will be. Marks the end of over number 5, 30 for the loss of 8. So finally, captain gets him into the attack to bowl the last over, the 5th bowling option. Oh, what a throw. What a throw from Rajdeep. Well, he understood that there is an opportunity there at the non-striker's end. He's shy at the stumps, not in the perfect balance, but hits the bullseye. And the non-striker will be heading straight back to the pavilion. It's 9 down. Full toss ball, trying a leg spinner, and it didn't work. And that's been clobbered over for 6 runs. Well, he's just trying himself because that's the best time. Captain who doesn't bowl normally doesn't get an over to bowl. So this is the best phase to get yourself a bowl. Roll arms over. That is what he's doing. This
might be a no ball. Yes, it is going to be a no ball. They are running hard for the second. No, +2. So 3 runs will be added to the total. (39) 51 more runs required. So it's not about a target. It's about finishing well. It was a free hit. Even the catch is taken, it won't be considered. Single taken. So well bowled here, and just maybe a couple of balls left for the innings to get over, and the match as well. What a great performance, right? Started by Swapnesh Verip, the man in form, and shown how good form he is in. Played all the shots around. Is it going to be taken? That's taken nicely. That's all out here. As expected, the batter went for the shot, was taken in the deep by Swapnesh Verip. And that's all over here for Spartan KPM. They never were in the game. Swapnesh Verip started off in a blazing fashion, getting those 45 runs. And a handy contribution from Satyavan and Vikram, getting 17 and 10. Posted a huge total of 89 runs. They lost wicket, 5 wickets without getting a single run on the board. And from that onwards, the bus was already missed. There was no way they could have made a comeback in this game. And in the end, it was easily won, comprehensively won by the team of Tiger Brigade KPM. And now they will be definitely waiting for their opponent in the quarterfinal stages. So player of the match, undoubtedly, for a stunning ball batting performance right up the order as an opener, is Swapnesh Verip, who is going to be collecting his honor and award from our guest. Swapnesh Verip for his brilliant 45 runs list with 5 sixes and 2 boundaries. Gets away with the player of the match. Meanwhile, we'll have a small break of 10 minutes and we'll be heading for the next round.
सेट युअर फील्ड. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. पुन्हा एकदा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. या दुसऱ्या सत्रातला पहिला सामना रंगेल ऋत्विक बॉयज थिबीम विपक्ष DSK मडगाव. आणि दोन्ही संघांना सूचना आहे, ही सक्तीची सूचना असेल. डगआउट मध्ये बसणं हे कंपल्सरी असेल. डगआउट कंपल्सरी दोन्ही संघांना. त्यामुळे प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेक युअर डगआउट. आणि त्याचबरोबर 12वा खेळाडू 12th मॅन कंपल्सरी इन कॉमेंट्री बॉक्स. 12वा खेळाडू हा सक्तीचा असेल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अन्यथा तुमची कोणतीही तक्रार स्कोररद्वारे ऐकून घेतली जाणार नाही. थिबीम टीम, पुन्हा एकदा सूचना आहे. पंचांकडून तुम्हाला सूचना केली जाते, रिक्वेस्ट केली जाते. आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. थोडी घाई करा मित्रांनो. टाइम इज मनी. वेळेला खूप महत्त्व आहे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला 2चा टाइम दिला होता. आता 3:04 झालेले आहेत, म्हणजे जवळपास 1 तास उशीर झालेला आहे. Twelfth man compulsory in commentary box. So please note. चला, मडगाव बॅट्समन प्लीज कम. विनंती असेल मडगाव संघाच्या फलंदाजांना आपण मैदानात दाखल व्हायचंय. Both team, 12th man please. Batsman name.
नमस्कार. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. चालू होतोय सामना. ऋत्विक बॉयज टीम विपक्ष DSK मडगाव. नाणेफेक जिंकली आहे टीम संघानं आणि प्रथम निर्णय घेतलाय स्वाभाविकपणे क्षेत्ररक्षणाचा, अर्थात गोलंदाजी करतील ऋत्विक बॉयज टीम आणि त्या समोर आव्हान असेल फलंदाजीचं, ते म्हणजे DSK मडगाव या संघाचं. मडगाव संघाची सलामीची जोडगोळी मैदानात दाखल झाली आहे. स्ट्राईक एंडवर राकेश, नॉन स्ट्राईक एंडला दामोदर सज्ज झालाय आणि गोलंदाजी मार्कवर टीमचा फिरकीपटू. पहिला चेंडू स्वतःची स्वाभाविक गोलंदाजी करतोय रोहन साळगावकर. पहिला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये, एक सिंगल आली आहे. स्ट्राईक रोटेट झालाय आणि धावफलक पुढेच खातं खोललं गेलंय धावफलकावर. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर केली गेली आहे. त्यासोबत विराज, एक सुंदर गुणलेखक. अप्रतिम चेंडू वाईडच्या आशेनं सोडला होता, परंतु पंचांवर त्याचा कोणताही परिणाम नाहीये. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. आता सलगचे 2 निर्धाव चेंडू टाकतोय रोहन साळगावकर. अप्रतिम चेंडू कट केलाय. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत 1 धाव ही धावफलकावर जोडली जाते. 1 धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचते 2 धावा विना गडीबाद. अप्रतिम दर्जाचे खेळाडू या मैदानावर आपण पाहतोय. यावेळी दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. कारंजा उडालाय, क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली. कोणती चूक होत नाहीये. फलंदाज बाद झालाय. पहिली विकेट, पहिला गडी माघारी परतेल दामोदर, सॉरी राकेश माघारी परतलाय. राकेश अगदी स्वस्तात माघारी परतलाय. फक्त 1 ही धावसंख्या, फक्त खातं खोललंय त्याने. आता मात्र वनडाऊनच्या रूपात एक जबाबदारी खेळाडू रोशन नावाचा भरभक्कम खेळाडू मैदानात दाखल झालाय. रोशनवर जबाबदारी असेल दामोदरला साथ देण्याची आणि त्याचबरोबर थोडासा संयम देखील दाखवावा लागेल, कारण 5 षटकांचा सामना, समोर चांगली गोलंदाजी चालू आहे. आणखी एक अप्रतिम चेंडू. ज्यावेळी रनअप, एक छोटं रनअप रोहन साळगावकर याचं, ज्यावेळी बॉल डिलिव्हर करतो त्यावेळी अचानक गती वाढवली जाते आणि तो चेंडू मात्र अगदी ब्लॉक होलमध्ये वेगात येतो. ही खासियत आहे रोहनची. पहिलं षटक समाप्त झालंय. पहिल्या षटकाच्या सांगत्यानंतर धावफलक पोहोचलंय 3 धावा धावफलकावर 1 गड्याच्या मोबदल्यात. थोडीशी संथ सुरुवात आणि चांगली सुरुवात, म्हणजे नाणेफेक जिंकल्यानंतर गोलंदाजीचा जो निर्णय घेतलाय तो सार्थकी ठरवलाय पहिल्या षटकामध्ये रोहनने. चर्चा होते दुसऱ्या षटकासाठी आणि अर्थातच भारदेश तालुक्याचा स्पीड स्टार आलाय गोलंदाजी मार्कवर. नामदेव बाणावलीकर स्वतःच्या हाईटचा पुरेपूर फायदा घेतो गोलंदाजी करताना. स्ट्राईक एंडवर सज्ज होईल तो रोशन. दूरवरून खेळायचा होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अपेक्षित उसळी घेत नाहीये, थोडासा खाली राहिलाय चेंडू आणि दरम्यान निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर केली जाते. निर्धाव चेंडूने सुरुवात करतोय, अर्थात धावफलक हे अडकलंय 3 या आकड्यावर. यावेळी थोडासा धीम्या गतीचा चेंडू होता, फसवलं गेलंय आणि फसला देखील. रोशनला जावं लागेल माघारी, बॅक टू दी पॅव्हेलियन.
स्वस्तात दोन फलंदाज माघारी आलेत. पहिली विकेट रोहननं घेतली आहे, दुसरी विकेट नामदेवनं घेतली आहे. रोशनचा झेल टिपलाय रोहननं. चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत प्रदर्शन थिविम संघानं, परंतु मडगाव संघाला आता मात्र पिकअप घ्यावा लागेल. सर्वेश नावाचा फलंदाज मैदानात दाखल झालाय स्ट्रायकिंग एंडवर आणि याच्याकडे जबाबदारी असेल डावाला पुढे नेण्याची. भागीदारीची गरज आहे, भागीदारी होणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला थोडेसे मैदानी फटके खेळणं गरजेचं आहे, ग्राउंड शॉट खेळणं पण गरजेचं आहे. परंतु फलंदाजाच्या मनात काय चाललंय हे त्यालाच माहीत असतं. यावेळी पुन्हा एकदा गती परिवर्तन करण्याचा नाद यावेळी अंगाशी आलाय, अंगलट आलाय. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू, पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर, धाव मिळते अवांतर. पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगाव असा चेंडूचा प्रवास. यावेळी फिरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेग, लॉंग लेग या रिजनमध्ये खेळायचं होतं, परंतु चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. पायावर आदळलाय चेंडू, थोडीशी गती दिली यावेळी नामदेवनं आणि पुढच्या चेंडूसाठी सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर. अगदी तोलून मापून टाकलेला हा चेंडू होता, अगदी वेगवान. परंतु जरी हाईट असली नामदेवला तरी त्याच्या चेंडूला हाईट देत नाहीये तो. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय, अपेक्षित उचल चेंडूला मिळत नाहीये. एक धाव मिळाली आहे 22च्या रूपातली. 6 धावा धावफलकावर, 6. आणखी एक अप्रतिम चेंडू. चेंडू पकडण्याची शैली देखील थोडीशी वेगळी आहे आणि त्यामुळे कदाचित चेंडूला उसळी मिळत नाहीये, हाईट मिळत नाहीये. ज्या पद्धतीने चेंडू डिलिव्हर होतोय त्याचा विचार केला तर एका दुसरा बाउन्सर अपेक्षित होता, परंतु एकही चेंडू कदाचित खांद्याच्या वर आला नाहीये आणि दरम्यान आणि गोलंदाजी मार्केट गोलंदाज सज्ज होतोय. रोहन रोहन तेजस गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा, पंचांकडून इशारा आलाय 1 बाउन्सचा. पंचांकडे वाईडच्या आशेनं बघितलं होतं, परंतु पंचांवर त्याचा परिणाम झाला नाहीये. सदगिरी नाईक सर आणि त्याच्यासोबत असलम शेख सर. यावेळी अप्रतिम डिलिव्हरी, सुंदर डिलिव्हरी. तेजसने हाईटचा फायदा घेतला. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर अपेक्षित उचल घेतोय चेंडू आणि यावेळी कदाचित लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू होता की काय. पंचांनी वाईडचा इशारा कळवलाय. चांगला चेंडू यावेळी कव्हरच्या दिशेनं खेळण्याचा प्रयत्न. हवा तसा बॅटवर मिडल होत नाहीये चेंडू, परंतु एक धावी धावफलकावर नक्की जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक थोडंसं पुढे सरसावलंय. अजूनही दुहेरी आकडा गाठण्यापासून 1 धाव कमी आहे, अर्थात 9 धावा धावफलकावर. यावेळी कनेक्शन टायमिंगचा मिलाप झालाय. चेंडू लॉंग लेग रिजन मध्ये पाठवला गेलाय. चाललाय चेंडू सीमारेषा पार. 6-6-6 षटकार. कदाचित हा मानस फसलाय, अंगलट आलाय, निर्धाव चेंडू गणला गेलाय. दामोदरच्या बॅटमधून एक षटकार निघाला होता
आणि तदनंतर त्याचा रिव्हर्स स्वीपचा मानस फसलाय. यावेळी हवं तसं कनेक्शन होत नाहीये, परंतु मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. एक धावी नक्कीच धावफलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 16 धावा धावफलकावर. 16 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. अजूनही जवळजवळ 13 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हो, अप्रतिम डिलिव्हरी. तिन्ही गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल, खास करून तेजसचं, कारण तेजसवरती जबाबदारी होती. 2 अनुभवी गोलंदाजांनी गोलंदाजी केल्यानंतर तोच परिणाम राखणं धावफलकावर हे आव्हान होतं, परंतु तेजसनं काय गोलंदाजी केले बघा. पहिले सलगचे 2 बाउन्सर पद्धतीचे चेंडू होते आणि त्यानंतर त्याने गती परिवर्तन देखील न करता अगदी वेगात चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते तो तुषार. यावेळी लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू. पंचांचे दोन्ही आज समांतर झालेत. शाहरुख खानच्या स्टाईलमध्ये असलम सरांनी टायटनची आठवण करून दिली आहे, टायटॅनिकची आठवण करून दिली आहे. चांगला चेंडू यावेळी कार्पेटच्या सहाय्याने ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक धावी धावफलकावर जोडली गेली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय 19 धावा. 19 लॉस ऑफ 2 विकेट. सुंदर चेंडू. स्विंग अँड मिस. कदाचित मिस झाला नाही आहे. चेंडू फळीची चुम्माच्या रंग्यात पकडले विकेट किपरनं. अनुमोदन मिळालंय. पंचांचं देखील जावं लागेल माघारी. काही काळ पार्टनरशिप भागीदारी होते असं वाटत असताना ऐनमोक्याच्या क्षणी माघारी परततोय दामोदर. बॅक टू दी पॅव्हेलियन. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो विशांत. स्वतःच्या शरीरयष्टीचा फायदा उठवावा लागेल विशांतला. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. ढुंडो ढुंडो रे साजना. डॉट बॉल आलाय. आता मात्र थोडंसं आक्रमण करावं लागेल. मोठ्या फटक्यांसाठी तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल, कारण जवळजवळ 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. यावेळी टायमिंग, ताकद आणि नजाकत देखील. मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू पाठवलाय सीमापार. षटकार.
Hello, hello. Hello, test, test. So 30 runs have been posted and 31 runs is the target. A good bowling performance here from started from Rohan by taking a wicket, just 3 runs conceded and 3 from the second over of Namde. Well experienced bowlers for the team. Rutik boys, Thivim and then Tejas coming in. They control the things well. Just 10 runs and important over from Tushar picking up 2 wickets and then those run-outs. In the end, they posted just 30 runs on the board. DSK Margao in 5 overs. None of the batters were in the double digits. All ended up with single digits, and that's why you see a very low total. Very good bowling performance here from all the bowlers. That everyone was well disciplined and kept the things rightly under control in this particular bowling spell. And that's why we see just the 31 runs being the target. So now it's up to the batters to finish the job. What is started by the bowlers. Datta and Ritik. So another player who has played for many higher clubs and represented even the Goa tennis ball cricket in the past. Datta as a stalwart is coming as an opener, and Roshan with the ball in his hand. Ritik to give company to Datta as his opening partner. Just the 31 runs needed. They are all set for this run chase. Roshan has been given the job of bowling this first over. It's a skiddy customer. I have faced him a couple of times or 3 times in the GCA division matches. Plays a lot of leather ball cricket. In that time also he was a skiddy customer. Although we have aged up, but I still see that pace in Roshan. Always nippy and bowls accurately more than enough. This time he just bowls a full toss ball that's been belted down the ground and a boundary over the long off region. The first boundary here for the batting side. Well, in tennis ball cricket, there's a margin for error is very less. It's just 5 or 6 overs game, so you got to be right on the button, right on the mark from the start. So this time a single taken gets with the back on strike. Slight delay for this particular match as the time taken by this side to travel from north. So we waited and good to see that even the team's cracking shot, in fact, in the covers. The fielder is giving the chase, but the ball has been crisply timed. What a lovely looking shot. It was full, but he punched it very well. Just a pure punch from the batter. 9 runs already on the board and looking to heave the ball. That's a common shot that we see in tennis ball cricket, shuffling across and heaving the ball on the shorter side of the area, the square leg region. I think you see the wagon wheel and the chart of the scoring. You see maximum runs being scored in that region, almost 70-80% of the big shots, and that's why you see some big totals being posted of 80-90 runs
and most of those were scored in those regions. Lucky there, the ball just going over the head of the keeper and running down towards a short tournament region for a single run. And that's the end of Roshan's over. A couple of boundaries has been seen by both the batters each, and that's the end of one. It's 11 without loss. But at this point of time, it's such a lovely weather in the month of November, at least in Goa. It's very calm, cool, and we are in the winter season, and it's already started. It's a little chill out during the evening time, and that chill always stays in some part of the morning session. Yes, after maybe 11, 12 o'clock, you will find a little bit of sun brightening and giving that heat on the players, on everyone present out on the ground. But after that, I think around 4 o'clock, it once again gets a little cooler. Good time to play, good time to enjoy the game of cricket here at Konkan Railway Ground. Many times a leather ball cricket is also played here on this, and that's why you see some wonderful leather ball cricket also many times. So now this is all about tennis ball cricket. We are into day number 2. Here the match in the second session, match between DSK Margao. Not a good ball, not a good looking ball here from the veteran. Is lucky to get away with it. They should have sealed with a boundary, but at least getting a single. Not much of pressure, hardly anything from on the batters. You see them will be cruising. We will not take 5 overs. Once you get 11 of the first, the asking run rate has dipped down well below 6 runs per over. So that's a good sign always for the batting when the job has been done incredibly by the bowlers. Sarvesh, what a prolific performance he had been during his prime time. And I always say cricket not only has been a game, but it's a revolution in India. Still there playing for the professional circuit. I saw him during my age, during my prime time, is coming as a bowler, as a batter, and has performed very well for many of the top clubs in Goa when there was open tournaments being held. But now it's all about franchisee based or panchayat municipality or constituency wise tournament. This almost the first ever constituency wise tournament being held after the CM's trophy. So it's a very good concept that has been brought by Force Not 7 and Model Margao. Trying to heave the ball. Oh, not much power, not much power. And Sarvesh very happy with that wicket. He's always, he kept the fielder in that right position, trying to bowl a full ball. And the batter trying to lift it over the top, and he perishes by giving a catch in the deep mid-wicket region. That's the end of wicket number 1. It's 15 for 1. A punch down the ground. Tejas coming in at number 3. Sarvesh is doing a good job, just conceding 5 runs of this over. That marks the end with a single. 16 for the loss of 1 after 2. So 16 runs have been scored, 15 more runs required, 18 ball remain. Asking run rate dipped down already below 6 runs per over as expected. The batters, Punaji Kalangudkar will definitely be missed because he's playing leather ball cricket on one of the venues on a tournament. So he will be definitely missed. That will definitely strengthen the side if Punaji is available. But at this moment, we have to play with whatever 11 that you are having. And in bowling, they have done a good job. They have not got the strongest of the opponent outfit, who are strongest in terms of not having that much of experience playing in professional circuit nowadays. Yes, they were
are forced to reckon with during their prime days, maybe 10 years before. But now they are just enjoying the game of cricket, where Damodar Shirudkar as well, along with Sarvesh. They are enjoying this game. This is another one. This might be a chance. It might be a chance. And taken. The ball went high, very high, and could not get the distance. And the fielder was placed nicely over there. Takes the catch. That gets rid of the second wicket. So at least they are getting some moments for them to enjoy the bowling camp of DSK Margao. It's 17 for 2. So in comes the next batter, Rohan Salgaonkar. What a sensational player he has been for over the years. He has been a performer, par excellent, bowling in the power play overs and coming in as a batter, playing some handy knocks. Highly decorated player, I must say, from Goa as an all-rounder. And he gives by, oh my gosh, that was caught, and definitely a chance going back behind. You can see the reactions, highly animated reactions from behind the wickets by Damodar Shirudkar. You can feel the pain, the dejection on the faces after dropping that catch. Important catch of Rohan Salgaonkar, very, very important. Rohan is still trying to search the ball here. Couple of balls going straight back in the hands of the keeper. They are slightly upbeat here in this over. Certainly, I can sense that. This time he gets hold of it. This time he gets a lot of hold of it, and that goes long. 6 runs from Rohan Salgaonkar. That's the first one of the innings for Rohan, as well as his team, Rutik boys. Tivim marks the end of over number 3, and the score is 23 for the loss of 2. Just 8 runs needed of 12 balls. So in comes Ritesh. Ritesh bowling over number 4 with Rutik, in fact, Tejas on strike and Rohan at non-striker's end. Just a matter of a couple of boundaries or 1-6 that is going to finish off this game. But is there some fight back left? Pulled away in style, pulled away in style. Brute force here, well in position. 6 runs, and that just needs another 2 runs for the victory. Just 2 more required here for the victory. So we saw back-to-back sixes. One of the last ball from Rohan Salgaonkar, and now this one. This was way too short on this wicket. He's not a quick enough bowler to trouble the batters. Tejas. That's much better actually. Just around the back of length, going straight back in the hands of the keeper. That's advantage that you have as a left-arm medium pace bowler. And if you're bowling short, you are losing all that advantage of taking the wickets. Once again from round the wicket. Punching it over the head of the bowler will definitely get a single. Sarvesh giving the ball back to the bowler. Just the 1 run away. The scores are tied. 1 run away from the victory. Let's see whether they can get it off with ease, or Rohan goes for the big one. In the air, might be a chance, a difficult one. No, it is away from the fielder at the point. So single it is, and they are getting a comfortable victory. So DSK Margao, although they will be happy, decently happy with the performance, as they made them work for the 4 overs to seal their victory.
for Rutik boys team. But in the end, it's all about enjoying the game. I think DSK Margao definitely must have enjoyed playing in a constituency level cricket tournament here at Konkan Railway Ground, Margao. But the bowling performance, I think, was the talking point of this game. Right, started from Rohan Salgaonkar by taking a wicket and a wicket for Namdev as well. So it's just going to be the bowlers here ruling the chart and getting all the accolades in a low-scoring encounter. Meanwhile, we'll be heading for the toss of the next game. It's time to announce that the Player of the Match award. So, Player of the Match goes to Rohan Salgaonkar for bowling a remarkable first over, just giving away 3 runs and taking 1 wicket, 1 scalp, and also contributing with a bat with a 6 and 7 runs not out. So, Rohan Salgaonkar, Player of the Match.
मुकाबला होगा आरुष 11 पेयर नेम वर्सेस ऋत्विक बॉयज। सॉरी, मुकाबला होगा आरुष 11 पेयर नेम वर्सेस ऋत्विक बॉयज थीवीम के बीच में। टॉस हो चुका है, सिक्का उछला और पक्ष में गिरा है पेयर नेम के। आरुष 11 पेयर नेम won the toss and elected to bowl first। तो अब आएगा मजा, लेकिन बात की जाए तो पेयर नेम के सामने आज पुनाजी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अगर वो होते तो वो बैटल देखने का मजा ही कुछ और था। तो थोड़ा सा आसान होगा पेयर नेम के लिए, लेकिन जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और बात की जाए पेरनेम की तो आज मैडी दिखाई नहीं दे रहे, घुंघरू दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके, लेकिन उनके खेमे में तगड़े खिलाड़ी है जरूर। अप्पाली कलंगुटकर कल के दिन में मैन ऑफ द मैच कंजुना में रहे थे। वो सुचित नांचे बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गुरुप्रसाद आरोस्कर, अनुज केरकर है, सूरज गावड़े और साथ ही साथ नीतीश नीतेश कांबळे अपकमिंग स्टार। ये सूरज गावड़े और नीतीश की बात की जाए तो बिल्कुल अनुज के साथ वो अच्छा प्रदर्शन अब तक करते आ रहे हैं। हर्ष 11 पेरने वन द टॉस, सेलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। तो सभी स्टार है, किसके कंधों पर पहले ओवर की जिम्मेदारी, कौन करेगा शुरुआत, ये सवाल रहेगा। अनुज भी कर सकते हैं, अप्पाली करते आ रहे हैं, नीतीश कांबड़ी बहुत बार कर चुके हैं, तो कौन शुरुआत करेगा ये सवाल जरूर रहेगा। लेकिन शायद वार्म अप की कर रहे अनुज केरकर, तो शायद उनको देखने को मिलेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर। पिछले मुकाबले में जो कि अंश 11 पेरने में हमें 900 कशायकर नहीं दिखाई दे, वो इस टीम में मौजूद है। तो आखिरकार जो कि डिसीजन हो चुका है, अप्पाली कलंगुट करके कंधों पर जिम्मेदारी दी है। स्ट्राइक एंड के ऊपर दत्ता, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ऋतिक। पहली गेंद बहुत ऊपर गई है, गेंद के नीचे अनुज केरकर गैदर कर रहे हैं, और ये बंदा कभी गेंद छोड़ता नहीं है, और वो नतीजा देखने को मिला। पहली गेंद के ऊपर दत्ता सस्ते में, मतलब 0 रन की बैग सर के ऊपर उठाए निकले पेविलियन की ओर। अच्छे खेल का प्रदर्शन, अच्छी शुरुआत जो कि टॉस जीतने के बाद आरुष 11 पेरनेम द्वारा हो चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर हल्के हल्के रुक करते हुए, शायद वो तेजस मैदान के भीतर दाखिल होते हुए। और आज थीवीम टीम को पुनाजी की गैर मौजूदगी वो बहुत सलती नजर आएगी, वो बहुत याद दिलाएगी, क्योंकि इस मुकाबले में जरूर पुनाजी का होना जरूर था, बहुत अहम था। तो अब मुकाबला चल रहा है जो कि ऋत्विक बॉयज थीवीम और आरुष 11 पेरनेम के दो टीमों के बीच में। ओ, ये खराब और साधारण गेंद।
पटकी हुई गेंद थी और ऑफ स्टिक के काफी बाहर, अंपायर के दोनों हाथ समांतर, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। और इस वाइड के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। अच्छी गेंद थोड़े से ब्लॉक करने की कोशिश, फॉलो थ्रू में रोका गेंद को, रन आउट का मौका, क्या होगा? जी हाँ, ओहो हो, गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में रन के लिए दौड़ पड़े। वो रिस्क थी, वो आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन सही समय पे क्रीज में पहुंचते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब इक्के दुक्के के साथ आपको मुकाबले को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही हो तो सटीक लाइन और लेन के साथ अगर गेंदबाजी हो रही है तो आपको उस तरीके की बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी। इस बार दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के टो के ऊपर गेंद, और देखते देखते रन लेने की तमाम शंकाओं को खारिज कर दिया सूरज ने। अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर, आमदार चषक, अच्छी गेंद कारपेट के सारे गेंद को मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में सिंगल बनेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ, रन संख्या आगे बढ़ती हुई, स्कोर कार्ड जो कि पहुंचा 3 रनों के ऊपर। ये फुल टॉस गेंद सीधी तरफ खेला, 900 का शॉट कर गेंद के पीछे, जब तक आते झपटते वापस करते, अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, मात्र 1 रन बना, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लगभग शेष, और इस बार घूम के खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद कम उछाल लेती हुई गेंद पैरों से टकराई, लगभग बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, मात्र रन बने हैं 4 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और बात की जाए तो ये नज़दीकी दोनों टीम है, ये एक दूसरे को जानती है भली बाती, क्योंकि बहुत बार खेल चुके हैं एक दूसरे के सामने। और गेंदबाजी के मोर्चे पर बदलाव, मंदार झाटिये गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए, एंड फ्रॉम तोरसेम पेरनेम तालुका का, और एक ऑलराउंडर। बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक हमने देखा इस खिलाड़ी का, तेजस और ऋतिक। इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या होगा देखना पड़ेगा। 2 फील्डर के बीच में, 2 खिलाड़ियों के बीच में, फॉलो थ्रू में लपकना जरूर चाह रहे थे, लेकिन काफी दूर, और ये विकेट होते होते बचा है। मंदार गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार तैयार होते हुए, इस बार वही गलती, बल्लेबाज बदला लेकिन नतीजा ना बदला। इस बार आसान सा कैच दिया है मंदार के हाथों में, और वो सफलता दिलाते हुए मंदार, जो जिम्मेदारी लगभग दूसरे ओवर में अहम मौके पर वो गेंद थमाई थी मंदार के हाथों में, और वो जिम्मेदारी को भी से निभाते हुए अब तक 2 गेंदें डाली है, एक में विकेट जाते जाते गिरते गिरते छूटा है, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर वो कोई गलती नहीं की मंदार ने, और शायद वो ऋत्विक की हरा करी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए था मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, जो कि दर्शन दिखाई देते हुए,
दर्शन दाखिल जरूर हुए हैं, लेकिन दर्शन को अब रनों का दर्शन करवाना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि दर्शक उसी के लिए मौजूद है। अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के दर्शक इस मैदान के ऊपर मौजूद है, तो बिल्कुल अच्छा खासा प्रदर्शन वो भी एक्सपेक्ट करते हैं जरूर। इस बार सफल हुए थे पहले गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार फॉलो किया गेंदबाज ने, रन लेने की कोई शंका ही नहीं, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। फिर एक बार हल्के हल्के रुक करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर, और स्ट्राइक एंड के ऊपर दर्शन। ओ ये खराब प्रदर्शन, साधारण प्रदर्शन, पुल नहीं कर पाए। पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले का किनारा, गेंद बल्ले की चुम्मा चाटी, रंगे हाथ पकड़ा विकेट कीपर ने, और एक विकेट का पतन होता हुआ और सस्ते में लौटे। लगभग 0 रन के ऊपर लौटना पड़ेगा वापस दर्शन, और दर्शन ने बिल्कुल नाखुश कर दिया दर्शकों को। और उनकी जगह लेने के लिए मैदान के भीतर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर रोहन सालगावकर। स्कोर कार्ड रुका हुआ 5 रनों के ऊपर। अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है, 3 खिलाड़ी वापिस लौट चुके हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार तैयार। ओ आते आते उड़ाया है गेंद को, बेहतरीन करारा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, खूबसूरत कनेक्शन, बेमिसाल टाइमिंग, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से निकली, गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। कमाल भी और धमाल भी है रोहन सालगावकर, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में भी, और इस मुकाबले में आते आते शुरुआत की। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जानते हैं सामने वाली टीम के ऊपर अगर अटैक नहीं करोगे तो वो दबाव डालती जाएगी, और वही काम जिसकी जरूरत थी। न देखा मूरत, न देखी सूरत, रोहन ने देखी सिर्फ और सिर्फ टीम की जरूरत। ये सही समय पे छक्का आया है। ये सामने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा दबाव डालने वाला छक्का था, ये बहुत ही अहम मौके पर छक्का निकला है। अगली गेंद का रहेगा इंतजार, जो कि ईमानदार निकले है गेंदबाजी के मोर्चे पर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन के लिए दौड़ पड़ी, ये रिस्क लेना था, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट भी दिखाना था, क्योंकि ये छक्का निकला, उसके बाद सिंगल लेना ज़रूरी था, तो बिल्कुल वही काम किया और खुद के लिए स्ट्राइक भी रखा। 12 रन हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति, और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द गोवा मिस्टर रप्पाली कलंगुटकर इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, और सिंगल बनाए, दूसरे रन के लिए भी लौटे, और देखते देखते दूसरा रन पूरा हो चुका है। अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन, रन संख्या आगे निकलती हुई 14 रन, 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा खेल का प्रदर्शन, क्रिकेट की हर एक खूबसूरतियां नजर आती हुई इस मैदान के ऊपर। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। चलता हुआ मुकाबला ऋत्विक बॉयज देवीम वर्सेस आरुष 11 पेरनेम के बीच में। पेरनेम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला
और अब स्थिति जो कि थी टीम की, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, रन संख्या बन चुकी है 14 और 3 विकेटें गिर चुकी है। थर्ड मैन के ऊपर गेंद निकलती हुई सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रन, 15 लॉस ऑफ 3 विकेट। ये थोड़ी सी भागीदारी, थोड़ी सी साझेदारी बनाने की कोशिश हो रही है रोहन और उनको साथ देते हुए तेजस। रोहन के बल्ले से एक छक्का जरूर निकला है और ये प्री माइंडेड शॉट था, पहले ही मन बना लिया था, पैर बाहर निकल चुके थे और इसी के साथ सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन अब तक बने हैं, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। रन संख्या देखा जाए तो ठीक ठाक है, टोटल ठीक ठाक है। इस बार आड़े बल्ले के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, थोड़ी सी बल्ले के थोड़े से ऊपरी हिस्से के ऊपर गेंद टकराई तो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, मात्र सिंगल बनेगा। बार बार वो आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश हो रही है और क्यों ना होगी, क्योंकि आउट स्विंग इन स्विंग करना जानता है ये गेंदबाज अप्पाली। और इस बार वही कोशिश बार बार दोहराई जा रही है, वही नतीजा सामने है, कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। लेग बाइज का इशारा बना, अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, रन संख्या पहुंचती हुई 18 रन, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पहली गेंदबाजी के मोर्चे पर ये बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार निकले विकेट कीपर की दस्तानों में। फंबल जरूर है विकेट कीपर, लेकिन रन देने की कोई शंका नहीं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रन देने की। 3 ओवर की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो रन बने हैं 18 रन, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर। गेंदबाजी के मोर्चे पर अनुष घेरकर आ चुके हैं। पहली गेंद पटकी हुई गेंद टिप्पा गिरने के बाद उछाल लेती हुई निकली विकेट कीपर की दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, विकेट की कोई संभावना नहीं और इसी बीच शुरुआत हो चुकी है बिंदी गेंद के साथ, जो कि अनुष घेरकर, बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम कोरगांव, पेरनेम तालुके का, गोवा राज्य का और एक उभरता हुआ सितारा। और एक अच्छी गेंद लेकिन कनेक्ट भी किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल बना, दूसरे के लिए लौटे है। गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इक्के के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, हिरनी की तरह दौड़ लगाए विकेटों के बीच में और देखते देखते दूसरा रन पूरा किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर सर्वेश दिखाई दिए। ये थोड़े से पीछे रखने की कोशिश, ऑफस्टिक के थोड़े से बाहर गेंद, और काफ़ी बार अंपायर का मानना है कि ये गेंद ज़रूर वाइड करार दी गई है। अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, रन संख्या पहुंची 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़ी सी साझेदारी बन रही है रोहन के मैदान के भीतर आने के बाद। अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए सुचित नानचे, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए, और जब तक आते झपटते वापस करते सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बदलाव, जो कि 22 रन, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद कराएगा इंतजार, जो कि अनुष केरकर,
ओ कनेक्शन बेहतरीन है, क्या दूरी भी है, जी हाँ बिल्कुल, चली गई गेंद, क्रैकिंग शॉट, अपने हाइट का फायदा उठाना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन करारा जवाब है, जवाब बेहतरीन है। रोहन सालगांवकर के बल्ले से निकलता हुआ एक करारा शॉट, 6 रनों के लिए मैक्सिमम सिक्सर। अगली गेंद लेके अनुष केरकर कमबैक करना चाहेंगे, लेकिन वो पलट के खेलना चाहते थे, घूम के खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग या लॉन्ग लेग के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से शॉट ढूंढ रहे थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बिंदी गेंद की समाप्ति। अगली गेंद का रहेगा इंतजार अनुष केरकर, और आज पुनाजी नहीं है तो रोहन के कंधों पर जिम्मेदारी, और सूचित नांचे स्क्रीन के ऊपर फिर एक बार आए, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट का पतन, स्कोर कार्ड 22 रनों के ऊपर, 28 रन, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, चौथा विकेट गिर चुका है, 28 लॉस ऑफ 4 विकेट, और लगभग चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है, तो और 12 गेंदों का खेल शेष है, 28 रन बने, यहाँ से अगर 15-20 रन बना लेगी तो कुछ लड़ने लायक गेंदबाजों के पास कुछ बचेगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है, तेजस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले मुकाबले में, रोहन और नामदेव बाणावलीकर की बात की जाए तो बिल्कुल काबिल तारीफ खिलाड़ी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर रमेश आनोलेकर, गांगुली के नाम से जाना पहचाना ये नाम गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेदर हो या टेनिस हो, रफ्तार का राजा। बेहतरीन गेंद, पहली गेंद, इसको खेलना उतना आसान है, ओहो, फुटबॉल मैदान के ऊपर, और कैमरामैन के लिए थोड़ा सा काम जरूर लगा है, क्या परफेक्ट शॉट है। फुटबॉल में भी कितना परफेक्ट होता है ये पता नहीं, लेकिन क्रिकेट में वो फुटबॉल, उसका नतीजा देखना पड़ेगा। बल्लेबाज सागर थे वहाँ पे, स्ट्राइक एंड के ऊपर दौड़ते गए, शायद खतरे की घंटी, OUT, आउट। बेहतरीन बेहतरीन, पहले गेंद के ऊपर वो हाराकारी, और शायद ये डायमंड डक सागर, इस प्रतियोगिता का पहला डायमंड डक सागर के नाम। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए, जो कि तुषार, थोड़ी सी साधारण शुरुआत, जो कि देखो रोहन आउट होने के बाद फिर से वही हाल देखने को मिलता हुआ, वही साधारण प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। 4007 सोशल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब मॉडल मरगांव, ये आयोजन बेहतरीन, आमदार चषक 2025 एक बेहतरीन मैदान के ऊपर देखने को मिल रहा है, और गेंदबाजी के मोर्चे पर रमेश आनोलेकर, अगली गेंद डॉट निकलाते हुए, और एक अच्छी गेंद, हो, और एक हिट है, विकेट कीपर का बेहतरीन हिट है, और अंपायर का फिर एक बार इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की ओर, लेकिन अगर ये आउट नहीं होंगे तो 2 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आउट हो जाएंगे तो एक भी रन शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मगर की बात है,
पहुंच चुके हैं क्रीज में, तो नॉट आउट का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर द्वारा। और अब रमेश अनुलेकर फिर एक बार अच्छी गेंद और एक अच्छी गेंद, इसी के लिए कहा गया था जब आए थे गेंदबाजी के मोर्चे पर, रफ्तार के राजा। हाइट नहीं है लेकिन रफ्तार देखने लायक होती है हमेशा। 7 ओवर में हाल ही में पिछले साल 7 ओवर में 15 रन देने वाला, लेदर बॉल क्रिकेट में 15 रन देने वाला गेंदबाज चाहिए। ये टेनिस क्रिकेट है, ये अलग बात है, लेदर बॉल की अलग बात है, लेकिन गेंदबाज वही है, गेंदबाज एक ही है। प्रदर्शन आपके सामने है। अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 5 और मात्र 1 रन खर्च किया है रमेश ने। ब्रिगेड के ऊपर तेजस बहुत देर से रुके हैं मैदान के ऊपर। आड़े बल्ले के साथ इस बार कनेक्ट किया मिड विकेट की दिशा में, गेंद ट्रैवल होती हुई शायद वहाँ पे अनुज केरकर है, जब तक आते झपटते वापस करते सिंगल बना। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति 32 रन 32। अक्षय नाइक जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर एक अलग स्टाइल है गेंदबाजी की, और वहां पे शायद कुछ आवाज आई थी, गेंद निकली है गोली की रफ्तार से। क्या किनारा लगा था, अंपायर का इशारा आने के बाद पता चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद चली गई, लेकिन रमेश की वो फील्डिंग, वो गेंद को रोका आखिरी पल में, और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष है, कम से कम यहाँ से 15 रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए अगर गेंदबाजों के लिए कुछ लड़ने लायक छोड़ना हो तो। और ये स्विंग एंड मिस, ये गेंद टिप्पा गिरने के बाद ज़्यादा उछाल नहीं ले रही है। दो गेंदों की समाप्ति, 4 गेंदें शेष है आखिरी इस ओवर की, डेथ ओवर की। कितने रन बनेंगे ये देखने लायक बात होगी। ये फुल टॉस गेंद लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। 900 का कर सटीक थ्रो, जानते कहाँ थ्रो करना चाहिए, और क्या लाजवाब थ्रो था। लेकिन तेजस की भी दाद देनी पड़ेगी, जो टीम की ज़रूरत थी साझेदारी करना, मैदान के भीतर रुकना, वो दिखाई देता हुआ। और अब बहुत देर के बाद, शायद ये देर हो चुकी है क्योंकि आखिरी 3 गेंदें बची है, और रिटायर्ड आउट तुषार, शायद नामदेव बाणावलीकर, नामदेव बाणावलीकर, इन कंधों में भी ताकत है, इन कंधों में भी बड़े शॉट खेलने की हिम्मत है। क्या नामदेव वो काम करेंगे आखिरी 3 गेंदों के ऊपर? अगर 2 बड़े शॉट निकले इस 3 गेंदों के ऊपर तो ये मुकाबला देखने लायक रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम के अंदर अच्छे बल्लेबाज है, और नामदेव रोहन की बात की जाए तो अच्छे गेंदबाज है, तेजस भी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। तो इन 3 गेंदबाजों के बलबूते पर बिल्कुल मुकाबला लड़ा जा सकता है, अच्छा मुकाबला हो सकता है, जीता भी जाए
कुछ भी हो सकता है इस बार। घूम के खेलने की कोशिश, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद तेज रफ्तार से निकली, बल्ले को हवा देते हुए, बल्ले के कान में गुनगुनाती हुई निकले विकेट कीपर की दस्तानों में। बाकी का काम विकेट कीपर भाऊ ने पूरा किया और लगभग आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है और नामदेव स्ट्राइक एंड के ऊपर है। रन संख्या रुकी हुई मात्र 35 रनों के ऊपर 35। अल्टी पल्टी की कोशिश लेकिन खड़ी हो गई गेंद, ये गलत सोच और विकेट का पतन। नामदेव बाणावलीकर बैक टू द पेवेलियन, लौटना पड़ेगा वापस। तो अच्छी गेंदबाजी, अक्षय नाइक आ गए, छा गए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में उनको देखा गया था कप्तान के नज़रिए से, और उसी के ऊपर खड़े उतरते हुए, उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरते हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिम्मेदारी ऐसी बात है, कोई बचपन में भी निभाता है और कोई बचपन में भी टाल देता है। ये खेल है क्रिकेट का, क्रिकेट में कब क्या कैसे होगा पता नहीं सकते, मुकाबला बदलने में वक्त नहीं लगता, एक गेंद काफ़ी होती है। और स्कोर कार्ड रुका हुआ 35 रनों के ऊपर। अब तक 5 गेंदे हो चुके हैं और उसमें मात्र 3 रन खर्च किए हैं अक्षय ने। मैन फ्रॉम धारगढ़, फुल टॉस गेंद, आखिरी कितने रन बनेंगे, सटीक थ्रो, लेकिन देखना पड़ेगा। ये 2 रन शायद बन जाएंगे, बन चुके हैं और 37 ऑन द बोर्ड, 38 रन टू विन। 37 रन बने, 38 रनों की है ज़रूरत, लगभग 36 गेंदों का खेल। इसका मतलब आपको रनअप बॉल भी कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आध दूसरा रन ऐसे भी निकलेगा। तो 36 गेंदे 38 रनों की ज़रूरत है। क्या होगा मुकाबले में? अच्छी गेंदबाजी ज़रूर है थिवीम टीम के पास, लेकिन क्या वो पेरनेम के बल्लेबाजों को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए कुछ ही देर में लौट रहे हैं, आपके साथ जुड़ जाएंगे हरीश सर।
So welcome back to see the run chase of these pre-quarterfinals, and after this is going to be the quarterfinals that will be played with the team of Kapim. Tiger Brigade Kapim will be definitely also watching this game. Good bowling performance, frugal bowling performance from all the bowlers. Started with Apali picking up a wicket, then Manohar, then Anush Kirkar. 10 conceded, but I think Ramesh Anulikar was the most express pace that we have seen as a left-arm medium pacers, and a total of just 38. Yeah, they will be feeling maybe a 15-run shot to have a fight, but you never know. If Rohan Salgaonkar starts off by picking wickets, then anything is possible. Nicely played with soft hands, driving the ball not too hard, just pushing it on the offside for a single. Aggressive batter. And Suraj Gaudia, what a crafty player. He is left-hander, plays according to the situation, has got the big shots as well as ability to maneuver the balls on the off as well as on the legs. He's got the drives, he's got the cuts, he's got the shots on the leg side, the slog sweeps, the reverse ones, everything he has in his cricket armour, in his arsenal. He's going to be a very important player for this team. Oh, slog, man there. But he just waits. He just saw the ball going across the line for 6 runs. Nicely picked up his spot and nicely picked up the ball as well to hit across the line. Absolutely smacked it. Smacked out of the middle of the bat. This time he's charging down. Opportunity. Just dropping short of the fielder. He should have dived maybe just in front. That's what the bowler must be thinking. He was taking a few steps forward, as the coaches tell you. Take a start. But still, I think the ball has landed slightly short. Not the sweetest connection here from Suraj Gaude. But you expect when the total is not much, they are going to take charge against the bowlers. Single on the leg side. And aggressive is the best way of defense. If you're going to the target of 38 runs, at least the first 3 or 4 batters can go hard against the bowlers. And if they come right, at least one of the batters come right, I think this total will be chased within 3 or 4 overs. And that's what Suraj Gaude will be thinking in the same lines. Wonderful slower off cutter. The ball kept little low, never picked up by the batter over there. Leg by signal by the umpire. Will be adding 1 more to the total. 9. Viraj Tendulkar assisting me with the scores in this entire force. Not 7. Organized Amdar Chashak, powered by Model Margao. In the Goral ceremony, I saw the Honorable. Oh, that's a lovely shot. He founds the gap and he will definitely get a boundary. Shot up out of the boundary, switched on the offside towards the backward point region, getting a boundary. After a 6, that was hit of the very first ball from Suraj Gaude. Excellent batting from him. They got plenty of runs off this first over. 13 without loss at the end of 1. That's what I say about the batting prowess of this young boy, Suraj Gaude. He was prolific in his young days, was always a learner of the game and learned the art of taking the opposition and picking the right length to play his shots. He's got so much of skill, so much of talent as far as shot making ability is concerned, and most of the time your consistency depends upon which shot you will play for a particular delivery and where exactly are the fielders. Finding the gap is also another value added point to his batting prowess. Nitesh meanwhile just looking for nudging the ball around and getting a single. Playing it slowly and steadily here against Namdev. These are the 2 top performers as far as bowling is concerned. Both playing the same team in Panchayat Municipality, Rohan Salgaonkar Point region. And Namdev will be looking to pick up 1 wicket here at least of Suraj Gaude here at this moment. Once again on the leg side. The same region where he got a 6 earlier on. Going through the motions, they are waiting for something to happen here.
maybe a flurry of wickets that falls down quickly in maybe 3 or 4 ball succession. Oh no, that is a staggering shot. What a full shot that was. Absolute disdain here. No mercy shown for the bowler. And he's telling that don't bowl me over there. I'm going to bruise you all day long. How well he picked up, and important was to take the position from the front to the back, and he picked it up really early. So with this, score moves on to 21. And now looking for a single. Very smart Namdev running after the ball, stopping, but the single was easily taken. So they've got a 6 of the first over and now a 6 of the second over from Namdev. They're getting runs of almost every ball. And this match is heading in one direction for sure. 38 being the target, already posted 22 with the ball left in over number 2. Looking to drive, just slicing the ball at the backward point, looking for a couple of runs, running hard, running quick and hard. That's very, very good running within the wickets. Well, they are not relaxing, they are not complacent. That is a sign of a very professional outfit who have come out here, all guns blazing, who have come out here to show the impact of this entire squad. They are a wonderful professional unit, and they are showing that we are just not here to score big ones, the sixes and the boundaries. We will also work hard for every possible run and an early finish for our team. 2 overs gone is 24 without loss. Another just 14 runs needed. In comes Harsh, driven firmly down the ground, and Rohan patrolling their area. Just going to be a single. 13 more runs needed with both the openers playing well and playing steadily. Suraj Gowde is in a dream touch. He was in all Goa Chhatri Maratha Samaj tournament where it was concluded recently. Ended up as the runners-up team, the captain of the runners-up team, Suraj Gowde. This time, whacks the ball. Oh, that beats the fielder. Beats the fielder with the pace and the ball deviating a little bit in the outfield. But anyhow, no one is blaming the fielder. They know that the match is well gone. When you are posting a total of just 37 runs, that is a total batting collapse or failure that we can call. And this is not a good enough total to a strong side like this Pandm team. Not the best of the shots, taking his eyes off the ball, but he'll be ready for the next one. So if you see the strength of this team, Arush 11 Pandm, they are very strong in bowling and batting department, and holds very good high caliber players in their team who knows much about this game of tennis ball cricket, and gained a lot of exposure playing in some with some big stars, not only of Goa but also with all India level, and that brings in the even more experience in the franchisee. Nice piece of bowling there, beautiful bowling with pace, angling the ball away, understanding that the batter was already going for the switch hit. So delaying the inevitable at the moment. Harsh 29 with just 9 runs needed. 3 dot balls in a row by Harsh against Suraj Gowde. Well bowled once again. That fuller length, Yorker length, gets a single. Just the 6 runs taken of this over marks the end of over number 3. Is 30 without loss. 8 runs needed.
So in comes Datta to Bhau. 8 runs needed. Lots of balls left here for the victory. Charging down and picked away for just a single on the leg side. So just another 7 runs needed. Both the openers playing well here. Good to always get victory without losing any wicket. That builds the entire confidence of the squad, not only of the batters. Batters will definitely go very strongly, very positive into the quarterfinals when they are playing the team Tiger Brigade of Pandm. Well bowled here from Datta. Playing is from Nitish Kamli. The young gun facing the stalwart veteran. Played a lot of cricket in his life, Datta, and knows a thing about too. This has been smoked out of the ground. That ball did not land on the ground. It landed straight on the sweet part of the bat, and that's over the deep mid-wicket boundary for another huge one, and that levels the score. 1 run away from the victory here, the team Arush 11 Pandm. Just 1 run. And they will be doing it with the deft touch, not with the big shot. That's good cricket here from the team. And finally, they win handsomely in the end. A good, comprehensive victory from the team of Arush 11 Pandm, winning by a thumping 10-wicket victory. And it started by the bowlers. Actually, the score was hardly anything for the batters. No pressure whatsoever. They played with free and with ease, without any burden on their heads. And great performance from the bowlers has definitely lifted the morale of the entire camp. So certainly a low scoring encounter which was tackled well by the batters of Arush 11 Pandm. And player of the match award goes to once again another bowler who has picked up 2 wickets and bowled picked up 2 wickets and got 8 runs, scored 8 runs off his 1 over, and that's why player of the match goes to Mandar. So Mandar picking up 2 of the crucial batters, and that's what set the entire batting order of Rutik boys. Thieving on the back foot straight away, and they never recovered from that. So it's going to be Mandar who is going to receive his player of the match award from the presentation arena. So I'll head back into that quarterfinals match, the match that will be played between Tiger Brigade of Pandm. And now it's going to be the team Arush 11 of Pandm. So 1 south, 1 north is going to face off against each other. Let's see who wins the toss. I'll give the update from the toss arena.
केपे या दोन संघादरम्यान सामना रंगतोय. ओ हो अप्पालीनं मगाशा सामन्यात जशी सुरुवात केली होती तीच सुरुवात या सामन्यात देखील करून देतोय आपल्या संघाला. बॅटची कडा घेतोय चेंडू, थोडा वेळ हवेत राहिला, बाकीचे सोपास्कार हे भावनं पूर्ण केलेत. कोणती चूक करत नाहीये सूरज गावडे, विकेटच्या मागे यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत उभा आहे आणि त्याने कोणतीही चूक केली नाहीये. निश्चितच सेलिब्रेशन होत आहे, कारण पहिली विकेट महत्त्वाची असते आणि त्यातही स्वप्नेशनं मागच्या सामन्याची फलंदाजी केली होती. त्याचं रूप बघितलं तर स्वप्नेशला बाद करणं हे महत्त्वाचं होतं आणि तेच करतोय यावेळी. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. तो सत्यवान नावाचा 17 नंबर जर्सी परिधान केलेला हा खेळाडू मैदानात दाखल झालाय आणि गोलंदाजी मार्कवर अप्पाली कलंगुटकर, फायनेस्ट ऑलराऊंडर ऑफ दी गोवा असं ज्याला म्हटलं जातं, तोच अप्पाली कलंगुटकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. नवीन फलंदाज सत्यवान स्ट्राईक एंडवर. सत्यवाननं मगाशा सामन्यात आपल्या संघासाठी चांगली फलंदाजी केली होती, तोच सत्यवान पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय. आल्या अल्टीपेल्टीचा फटका, सक्सेसफुल फटका आलाय. बॅटचं कनेक्शन खूप सुंदर झालंय आणि चेंडू चाललाय रोलिंग करत. रोलिंग बाउंड्री, चौकार. 4 धावा निघाल्यात. खातं खोललंय स्वप्नेश बाद झाल्यानंतर सत्यवाननं खातं खोललं आपल्या संघाचं आणि वैयक्तिक 4 धावा देखील आपल्या धावफलकावर लावल्यात. रोखण्याचा प्रयत्न निश्चितच असेल अप्पालीचा, काहीतरी मनसुबा वेगळा असेल, परंतु काय सत्यवानला रोखण्यात यश मिळेल का? अप्रतिम चेंडू, ब्लॅक होल पद्धतीचा पायांचा वेध घेणारा चेंडू होता. थोडंसं शफल झाला होता सत्यवान, लेग साईडला चेंडू टोलवायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाही आहे. निर्धाव चेंडूची गणना झाली आहे पण ओव्हरऑल चांगला सामना रंगण्याची शक्यता आहे. केपीएम देखील तेवढाच बलाढ्य संघ आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्यासमोर पॅन्डम संघ देखील तेवढाच ताकदीचा आहे. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झाला, परंतु यावेळी कदाचित ओळखलं होतं अप्पालीनं, त्यामुळे चेंडूला जास्त हाईट दिली नाही आहे, उंची दिली नाही आहे. पायांचा वेध घेतोय चेंडू, आतल्या बाजूला थोडासा वळतोय आणि निर्धाव चेंडू आणखी एक गणला जातोय. फुल टॉस चेंडू, यावेळी आता तो निसटलाय चेंडू, परंतु एक धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक हे पुढे सरसावलं गेलंय. धावसंख्या पोहोचली मात्र 5 धावा. पहिलं षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या षटकाचे जवळजवळ 5 चेंडू समाप्त झालेत. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. पॉवर प्लेची 2 षटकं. अप्रतिम डिलिव्हरी, फॉलो थ्रूमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न, अडवला देखील. धाव घेण्याच्या शंकेचं निरसन केलंय स्वतः अप्पालीनं आणि ओव्हरऑल चांगलं षटक टाकलंय. पहिल्या चेंडूवर 1 विकेट स्वप्नेशला माघारी परतवलंय, त्यानंतर फक्त 1 चौकार, त्यानंतर सिंगल. म्हणजे ओव्हरऑल फक्त 5 धावा खर्च केल्या आहेत. 1 गडी गारद केलाय, त्यामध्ये 3 निर्धाव चेंडू त्यानं टाकलेत. काय होईल? केपीएम संघ किती धावांपर्यंत मजल मारेल? कारण टायगर ब्रिगेड केपीएम संघ केपेबल आहे मोठी धावसंख्या उभारण्यात, कारण सत्यवान ती चांगली फलंदाजी करू शकतो. राजदीप मगाशी स्वस्तात बाद झाला, परंतु त्याच्याकडे देखील ताकद आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय मगाशा सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मंदार झाटिये, मॅन फ्रॉम पेरनेम, तोरसेम पेरनेम, 32 नंबर जर्सी. लनप थोडंसं जास्त घेतलंय. स्ट्राईक एंडवर सत्यवान. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा होता, परंतु पायांचा वेध घेणारा चेंडू. मगाशा सामन्यात आपल्याला सहजासहजी मॅन ऑफ द मॅच मिळालं नव्हतं, त्यासाठी मी तेवढे कष्ट घेतले होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय मंदार झाटे यावेळी गोलंदाजी मार्कवर. सत्यवान समोर कंजूसी गोलंदाजी करणं, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करणं तेवढंच सोपं नाही आहे, कारण सत्यवानमध्ये ताकद आहे मोठ्या फटक्यांची.
आणि यावेळी प्रयत्न झाला आहे, परंतु एका टप्प्यावर चेंडू अडवला जाईल का? क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात आणि जोपर्यंत परतीची फेक येते तोपर्यंत एक धावी धावफलकावर जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक हे पुढे सरसावलं आहे. धावसंख्या पोहोचली आहे ती 6 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. सत्यवानला मैदानात थांबायचं आहे, त्याला राजदीपला देखील सत्यवानची साथ द्यावी लागेल. दोन्ही फलंदाजांना मैदानात थांबायचं आहे. एक चांगली धावसंख्या पेडणे संघासमोर तुम्हाला उभी करावी लागेल. यावेळी मोठा फटका आलाय, दुरी बघावी लागेल. क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून एका टप्प्यावरून चेंडू चाललाय दूरवर आणि मोहर लागली आहे. 4-4-4 चौकार. त्याचबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून पेडणे तालुक्याचा आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू मुन्ना उर्फ सलील नाईक देखील या सामन्याचा आनंद घेतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून. चौकाराच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. धावसंख्या पोचली आहे 10 धावा. त्याचबरोबर केपे संघाचे बरेच फॉलोवर्स ते देखील हा सामना बघतायत. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एका टप्प्यावर चेंडू अडवला गेलाय. थोड्या वेळासाठी असं वाटलं होतं खतरे की घंटी जोर से बजेगी, परंतु चेंडू दूरवर राहिला. एक धाव घेतली गेली आहे. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक हे पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे 11 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 1 फॉर 1. यावेळी अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता. चेंडूफळीचा संपर्क पुन्हा एकदा झाला नाहीये. सत्यवान वारंवार काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतोय, कधी फिरून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, गिरकी घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, कधीतरी अल्टीपल्टी खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु आतापर्यंत सत्यवानच्या बॅटमधून एक चौकार जरूर निघालाय. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा मंदार सज्ज होतोय. मात्र दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना स्ट्रायकिंग एंडवर सत्यवान सज्ज झाला. यावेळी पुन्हा एकदा शफल झाला होता ऑफ स्टिकवर आणि मिड विकेटला एक सुंदर झेल टिपलाय. अनुष केरकर स्क्रीनवर आलाय आणि काय झेल टिपलाय बघा. अनुष केरकर जिथे असतो, ज्या वेळी चांगल्या फलंदाजीची आवश्यकता असते त्या वेळी अनुष केरकर ते प्रदर्शन करून दाखवतो. आणि यावेळी जी भीती होती सत्यवानची, ती भीती मात्र दूर केली आहे यावेळी मंदार झाटियेनं अनुष केरकरच्या मदतीनं. मी तर म्हणेन की सत्यवान थांबणं गरजेचं होतं मैदानावर, कारण सत्यवानकडे काबिलियत होती. थोड्या धावा जर झाल्या असत्या तर सामना बघायला मजा आली असती, कारण अजूनही संधी आहे फलंदाजांकडे, कारण ही दुसरीच विकेट आहे. सत्यवान पाठोपाठ येणारा फलंदाज, त्यामुळे त्याच्यामध्ये देखील तेवढी ताकद नक्कीच असेल. गणेश केळुसकर नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, चेंडूफळीचा संपर्क झाला नाहीये. ढुंडो रे साचना. जर कनेक्शन झालं तर मात्र 4 किंवा 6 धावा घाऊक स्वरूपात जरूर मिळतील, परंतु जर चेंडू निर्धाव गेला तर मात्र थोडासा दबाव वाढतो, थोडंसं टेन्शन वाढतं फलंदाजाचं आणि त्यानंतर हाराकारी करतो फलंदाज. यावेळी कव्हरच्या दिशेनं अक्षय जैन स्क्रीनवर आलाय, परंतु बॅकअप देणारा सुचित नांचे चेंडूची परतीची फेक करतोय आणि दरम्यान खातं खोललंय फलंदाजानं आल्या. दुसऱ्या चेंडूवर अप्पाली पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. अप्पालीनं आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे आपल्या संघासाठी. यावेळी बॅटची कट घेतली आहे. विकेटच्या मागे सूरज गावडे भाऊ कोणती चूक करत नाहीये. चेंडू फळीची चुम्मा छाटी रंग्यात पकडले विकेट किपरनं. आणखी एक गडी बाद झालाय. बराच वेळ मैदानात चाचपडत होता तोच राजदीप आता मात्र माघारी परतेल. बराच वेळ त्याने थांबण्याचा प्रयत्न केला, सोबतच्या फलंदाजाला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एक चौकाराचा मानकरी माघारी परतलाय. बॅक टू दी पेव्हिलियनच्या दिशेनं परतलाय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. तो विक्रम देसाई, माफ करा, गणेश बाद झालाय.
नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो विक्रम देसाई. परतीची फेक आली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे 13 धावा. कमी धावसंख्येचा सामना होईल का ही आता भीती वाटू लागली प्रेक्षकांना. परंतु यावेळी मोठा फटका काढण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक शोधलाय फलंदाजानं. पुन्हा एकदा विकेट आली आहे. आणखी एक अप्रतिम डिलेव्हरी. 13 धावा. 13 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1.5. अप्पालीनं चांगली कामगिरी केली. आतापर्यंत 3 विकेट्स घेतलाय 11 चेंडूंमध्ये आणि 7 धावा खर्च केल्या. शेवटचा चेंडू अप्पालीचा. यावेळी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न, परंतु नितेश कांबळी थोडासा दूरवर राहिला. स्टार्टअप घेण्यात चुकलाय तो आणि त्याचा परिणाम 1 धाव आली आहे आणि एका धावेच्या मदतीने षटकाची झाली आहे सांगता. 2 षटकं टाकल्यानंतर अप्पालीनं 8 धावा खर्च केल्यात. 3 विकेट्स घेतल्यात. म्हणजे केपे संघाविरुद्ध ही कामगिरी करणं खरोखरच फायद्याचं ठरेल. आणि अजूनही षटकं शिल्लक आहेत 3 आणि या 3 षटकांमध्ये केपे संघाला चांगली कामगिरी करावी लागेल. केपे संघामध्ये जी ताकद आहे त्या ताकदीचा वापर करावा लागेल. ती ताकद तुम्हाला दाखवावी लागेल मैदानावर. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय अनुष केरकर. उगवता सितारा. बॅटिंग बॉलिंग त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण सुद्धा. आणि स्ट्राईक एंडवर पुन्हा एकदा तयार. रिकव्हरीच्या दिशेनं थोडासा लांब राहिलाय चेंडू. विक्रम स्ट्राईक एंडवर आलाय. नॉन स्ट्राईक एंडला बॅटर चंद्रेश आणि अनुष केरकर सिंगलने सुरुवात करतोय आपल्या गोलंदाजीची. वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. ऑफसाईडच्या दिशेने खेळायचा होता जरूर, परंतु फॉलो थ्रू मध्ये अडवलाय चेंडू. निर्धाव गणला गेलाय. ओव्हरऑल चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत, परंतु केपे संघ थोडासा बॅकफूटवर ढकलला गेलाय. आतापर्यंतची यशस्वी गोलंदाजी. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. डॉट बॉल. वारंवार येणारे डॉट बॉल निश्चितच फलंदाजांना अडचणीत टाकतील. कारण असं म्हटलं जातं अचूक टप्प्याची टिचून केलेली गोलंदाजी ही फलंदाजांना अडचणीत टाकणारी असते आणि फलंदाज सध्या अडचणीत आहेत. आता मात्र तुम्हाला अटॅक करावा लागेल. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न. द्विधा मनस्थिती होती. लेग साईडला खेळायचं होतं, त्यानंतर ऑफसाईडचा पर्याय निवडला आणि त्याचबरोबर निर्धाव चेंडूची स्विंग अँड मिस. अप्रतिम डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळतोय चेंडू. डॉट डिलिव्हरी आली आहे. अनुष केरकर अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या
चेंडूवर मात्र एक धाव खर्च केली. त्यानंतरचे सर्व पाचही चेंडू हे निर्धाव टाकण्यात यशस्वी झालाय. तो अनुष केरकर 4 षटकांची झाली आहे सांगता. 4 षटकांच्या सांगतेनंतर धावफलक स्थिरावलाय. हे 15 धावा, 1-5, ओनली 15, लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा मात्र खर्च केल्यात. यावेळी सेकंड लास्ट ओव्हरमध्ये घेऊन आलोय अक्षय नाईकला गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू हवा तसा कनेक्ट झाला नाहीये. एक धाव येईल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होत नाहीये. एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलंय 16 धावा धावफलकावर. 16, लॉस ऑफ 4 विकेट. मग अशा सामन्यात सेकंड लास्ट ओव्हरसाठी आपण गांगुलीला बघितलं. आता सेकंड लास्ट ओव्हरसाठी अक्षय आलाय. अप्रतिम डिलिव्हरी, परंतु पंचांचा इशारा आलाय 22, अर्थात बॅटला न लागता मिळालेली ही धाव. पण मोठे फटके खेळावे लागतील. आत्तापर्यंत नाममात्र 2 चौकार निघालेत. फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचली आहे 18 धावा धावफलकावर. 18, लॉस ऑफ 4 विकेट. अक्षय नाईक गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी टायमिंग चुकलंय बॅटचं आणि बऱ्याच वेळानंतर अतिरिक्त चेंडू अर्थात वाईडचा इशारा आलाय पंचांकडून. 2 धावा मिळाल्यात अतिरिक्त स्वरूपाच्या. धावसंख्या पोहोचली आहे 20 धावा धावफलकावर. 20 ऑन दी बोर्ड. फुल टॉस चेंडू झेल होईल का? येस, अप्पाली कलंगुटकर आलाय. चेंडू खाली जावं लागेल माघारी. बॅक टू दी पेव्हिलियन. आणखी एक फलंदाज माघारी परततोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केलंय पेडणे संघानं. गोलंदाजी देखील चांगली केली. केपी संघाकडे चांगली ताकद होती. केपी संघाकडे चांगली क्षेत्ररक्षण होतं, चांगली गोलंदाजी होती, चांगली फलंदाजी देखील होती, परंतु फलंदाज कमी पडले त्यावेळी. बीमरसाठी रिव्ह्यू घेतला होता, परंतु तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, बाद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो प्रेम नावाचा. अक्षयने सफलता मिळवून दिली आहे. पुढचा चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी. कट करण्याचा प्रयत्न होता, मोठा फटका खेळण्याचा कोणताही इरादा नव्हता यावेळी. प्रेमानं खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रेमचा, परंतु आता मात्र निर्धाव चेंडू गणला गेलाय. कदाचित खांदे उतरलेत की काय केपीएम संघाचे, कारण केपीएम संघ तेवढा ॲक्टिव्ह दिसत नाही आता.
मोठ्या फटक्यांचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीये. निर्धाव चेंडू आणखी एक टाकला गेलाय. धावफलक स्थिरावलंय ते 20 या आकड्यावर. 20 ऑन दी बोर्ड. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक. शेवटच्या 6 चेंडूंवर किती धावा निघतील हे बघावं लागेल. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय तो रमेश अनुर्लेकर. पहिला चेंडू स्विंग अँड मिस पद्धतीचा नॅचरल अँगल मिळाला यावेळी. पंचांच्या उजव्या बाजूनं आलाय. स्वतःच्या डाव्या हातानं मारा करतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या बाजूला वळलाय. थेट यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये स्थिरावलाय. पहिला चेंडू डॉट बॉल निघालाय. दुसऱ्या चेंडूसाठी सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर रमेश अनुर्लेकर. हो 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 हो, टायमिंग गजब कनेक्शन, बेमिसाल टायमिंग. चेंडू पाठवलाय. आलेला रडारमध्ये आलेला चेंडू पाठवलाय यावेळी. मिड विकेटच्या टोक्यावरून हवाई फायर. या इनिंग मधला पहिला षटकार हा शेवटच्या षटकामध्ये आलाय. धावफलक पोहोचलंय 26 धावा. असे काही फटके आधीच्या षटकांमध्ये येणं गरजेचं होतं, कारण धावसंख्या पुरती 26 धावा फक्त. अप्रतिम डिलिव्हरी. यावेळी चेंडूची गती वाढवली आहे. एक धाव नक्कीच मिळाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु बॅकअप नव्हतं आणि दुसरी धाव देखील मिळाली आहे. नजरहटी, दुर्घटना घटी. बॅकअपला एकही खेळाडू नव्हता आणि त्याचा फायदा मिळालाय संघाला. 2 धावा मिळाल्या आहेत, अर्थात धावसंख्या पोचली 28 धावा. 28, लॉस ऑफ 5 विकेट. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि आता मात्र 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. प्रतिम चेंडू. आणखी एक वेगवान चेंडू. अप्पाली आलाय स्क्रीनवर. धाव. आणि इथं मात्र धावबा देऊन परतावं लागेल. प्रेमला माघारी यावं लागेल. प्रेम निघालाय बॅक टू दी पेव्हिलियन. आतापर्यंत विक्रमच्या बॅटमधून एक षटकार निघालाय. 2 एक डबल, एक सिंगल. त्या अगोदर बरेच चेंडू गणेशनं निर्धाव खेळले होते. अनुषनं त्याला हलू दिलं नव्हतं. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असताना विजय सफल झालाय. यावेळी फटका फसलाय. नितेश धावतोय परंतु एकच धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, केविलवाणा प्रयत्न होता. एकच चेंडू शिल्लक राहिलाय. एकच धाव मिळाली आहे. धावफलक स्थिरावलं 29 धावा. माफ करा, 30 धावा धावफलकावर. 30 ऑन दी बोर्ड. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा चेंडू. या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू. किती धावा आवश्यक असतील हे सांगणारा चेंडू. रमेश अनुर्लेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय शेवटच्या चेंडूसाठी. काय होईल, किती धावा येतील. सरळ दिशेनं मारलेला फटका. यावेळी दुसऱ्या धावेसाठी काम तमाम. एकच धाव आली. 31 धावा. 32 धावांची असेल आवश्यकता. 31 ऑन दी बोर्ड. 32 रन्स टू विन. जस्ट 36 डिलिव्हरीज. साधारण प्रदर्शन, केविलवाणं प्रदर्शन यावेळी केपीएम संघाने केलंय. परंतु तरी देखील टायगर ब्रिगेड केपीएम संघ टायगर प्रमाणे गोलंदाजी करेल का, टायगर प्रमाणे क्षेत्ररक्षण करेल का, तो कमबॅक होईल का, तो पलटवार होईल का, की आरुष 11 पेरनेम संघ एकतर्फी विजय मिळवेल, हे सांगण्यासाठी शेवटच्या सामन्यातील शेवटची इनिंग घेऊन आपल्या समोर येत आहेत पुन्हा एकदा हरीश सर.
धन्यवाद. थँक्यू. So well set here for the run chase. Not too many runs are posted on the board. And drives it very firmly in the covers. Excellent shot. A good stop there by the fielder. But a couple of runs taken easily. Once again, both these openers who were not out in the previous game continues in this game for the team of Arush 11 Pandm. Incredible job done by all the bowlers, and especially from Apali Kalangudkar, the captain, the leader from the front, taking 3 wickets for just 8 runs. That sets the tone for entire squad. Swapnesh Vedip was the crucial player that was picked up the very first ball, and they never looked back. The bowling unit kept on picking wickets, and just the one batter in the double digits, that was Vikram. That was the only batter who scored 12 runs, as all others scored just in the single digit. And that's why you see there's 31 posted in 6 overs. A pretty low total, I must say, considering a decent lineup that we know KPM side is Tiger Brigade. But if you talk about the opponent side, they are too strong on paper, and they always, most of the time, transform it on the ground. Oh, lovely shot, strong shot. Down the ground, 4 runs. So the bowler who looked very penetrating and very dangerous in the first 2 games for the KPM, but now he doesn't have that string. He knows that the total is not much, hardly anything to bowl at.
to defend for his team, and the batters are going aggressive. They know that attacking way is the best way. We can finish the game well in style. Well, I think you must give credit to the bowling of Vijay. He has definitely performed and excelled in this competition, picking up 7 wickets. He could have picked 8 if the catch was not dropped. 7 wickets in just 2 games. He is able to bowl those 4 overs. Another excellent shot. Class shot. Absolute class. Written all over it. Just opening the face of the bat. Nothing wrong with the ball and getting a boundary in the covers region. A quality shot here from Nitish Kamli to finish the over number 1 is 10 without loss. So they move on forward. The Arush 11 Pandm stride. If you see the strength of this team, they have Suraj Gowde, they have got Anush Kirkar, they have got Nitesh Kamli, they have got Apali Kalangutkar. So many players who come as an icon players in a lot of the open tournament. I was there in the Damba Premier League as an auctioneer, and you see many of these players playing as the icon players in many other teams. All the teams that are almost 15, 16 franchises playing in the Damba Premier League. So that speaks about the cricket growing in Pandm region. So many new upcoming talent are performing excellently and picking their spots in some important auctions as well. And that happens when you play a lot of cricket. You practice yourself in the nets and perform in most of the tournament. Consistency gives you the value. And we have seen all these players performing very strongly. They live up to the reputation in most of the big events, and that's why you see them winning many of the tournaments and playing very well for whichever franchises they are participating. So Pandm, we have already seen 2 teams. And I was speaking to some of my friends here, and we are discussing about that the strength of some of the constituencies where they can definitely register almost 3 teams. So much of talent in abundance in those constituencies, in those regions. Pandm is one such. So again trying to clear his front leg and drive the ball, but mistiming it. Suraj Gowde. I got already 12 on the board. Just that another 20 runs needed. A lovely shot. What a switch it. He knew that it was going to be an off-cutter, and he never gave intention. Absolutely smoked it out of here. Perfect timing and giving a perfect execution over the backward point region. Well, I always say this young boy is an exceptional batter, and once again he's proving his class over here. Suraj Gowde picks up the right shots most of the time. Out, caught behind. That was a quick ball, trying to slice the ball, taken very well by the keeper, and Suraj Gowde has to head back at the very next ball. Well, the ball came very quickly and went away from him. He wanted to slice it and got the leading edge. So that's the first wicket that has been taken by the Tiger Brigade of KPM. Suraj Gowde departs. It's 18 for 1. Here come, I forgot this name while I was taking the names of the players that are playing in the Pandm region. Here comes Guru Prasad Aruskar. What a fine player he is. He plays the shots as per merit of the ball. A good driver and hits it long when it comes to sixes. Yeah, and a good maneuver of the ball as well. Deft touch, single it is.
just doesn't go for the big shots. When the ball is definitely there to be hit, he gives a full thumb. So single, and Guru Prasad Aruskar is going to keep strike of the next over. 2 overs done is 19 for the loss of 1. Another 13 runs needed with 24 balls remaining. Well, they played very well, Tiger Brigade KPM, in the first 2 games, but the opposition was not so strong, as this team of Arush 11 Pandm. In comes Ganesh Keruskar, trying to play on the leg side, and Ganesh will be playing in the tournaments that are coming up shortly in Goa. The big one, the Mandrim Champions Trophy of 10 lakh, the biggest cash prize money, will be starting next week. And after that, Pandm Premier League. After that, it's going to be Damba Premier League. So much of cricket being played, and opportunities definitely galore in Goa. You just have to grab those opportunities and shine brightly. Just like here, Force not 7 giving you the Constituency Cup. We see a lot of municipality and panchayat level tournaments in the forefront. But now this Constituency brings a lot of players combining into a team. We see a lot of players playing in the municipality panchayat. Don't fall in those respective constituencies. Most of the time it happens in Vasco or, for example, in Margao as well. But they might fall in the Kurtorium constituency, but as far as municipality is concerned, they can play in the Margao municipality team. So it's a different combination. What we see here, Pandm certainly they will be falling in the same constituency and the panchayat as well. Looking to charge down, just going to be a single. Go for the drive there, slightly upish. 20 runs posted on the board, another 12 runs needed. This is a good over here from Ganesh Keruskar, because everyone is watching nowadays on YouTube, and you can't relax, you can't be complacent. Give it your best in almost every time you get an opportunity. Well bowled here, very well bowled here. Excellent over from Ganesh Keruskar. Really an excellent over under the circumstances when we see a 6, in fact a 6 of the previous over, and almost 10 runs taken of the first, just considered a single run. So well bowled here Ganesh Keruskar. Is turning out to be a good performer both with the bat and with the ball. Time played with soft hands, just going to get a single, and now just 11 more runs required. Very well bowled here by Ganesh Keruskar, keeping the things in check, and gaining the confidence here, bowling against some top bowlers and top performers, and just bowling this over for 2 runs. 3 overs done is 21 for the loss of 1. Another 11 required in 18 balls. Powerful shot. Might go a long way. Yes, it goes long distance. It is taken, but outside the boundary line. Very well caught here. And we'll be happy with that. The super shot here from this young boy, Nitesh Kamli, who is working very hard, not only on his batting, but also on his fitness and strength. Getting a little muscle in there. And this was short ball. He just pushes it on the leg side and gets a single, and giving strike to Guru Prasad Aruskar to get him a go here for that big one and finish this off in style. Vijay has been brought here. Well, you can see the energy level is way down when he was bowling in the first 2 games. He is bowling now. Vast difference between both the performances. Looking for the big one, mistimed. So Guru Prasad Aruskar is trying to go for the big one. He's trying to launch out of the park and finish this off in style.
for the team Pandm. And that is a biggie. That is an absolutely marvelous pickup shot on the leg side. Pick the spot. 2 sixes in this over, and that's the game over. Arush 11 Pandm have comprehensively made it into the semi-final spot. It was Musab challengers of Margao who reached into the semi-finals, the Margao constituency, and now it is Pandm constituency. Arush 11 Pandm have, I think they have dominated both the teams. First it was the bowling performance from the team that decimated the batting order of the opposition, and then coming with a clinical performance with the bat, and they are shining brightly here. They move into the semi-finals, being the second team in this force, not 7 organized Amdar Chashak, also powered by Model Margao. So congratulations to the team Arush 11 Pandm. They have been excellent in all departments, and that's why they have won both the games quite easily and quite strongly in the end. So that's it for the day. Player of the match undoubtedly goes to Apali Kalangutkar for picking up 3 wickets for just 8 runs. Tulsidas Gadekar is going to do the honors here of presenting the player of the match to Apali Kalangutkar. A great performance by the leader and performer with 3 wickets in 2 overs and just 8 runs conceded. So it was easy for the batters to chase it down. So Apali is the player of the match. Meanwhile, it's bye from Harish Kakodkar. Good night. See you next week. Next week on Friday. Good night. Shubh Ratri. Shabba Khair. Dev tumka saglyak bari raat diu. Until we meet again. It's bye from now.